पिघल गया होगा, सम्मोहित हो चुका वह मनुष्य। तब से संदूक में मनुष्य और मनुष्य में संदूक होने का भयावह डर घर कर गया है मुझ में। अब कर रही हूँ मैं प्रतीक्षा उस जादूगर की जो कर दे मुझे इस अंधी दीवारों के शहर से अदृश्य। और अंतिम कविता सोनबाई, अनुवाद अशोक चावड़ा। तुम सुनाती एक कहानी सोनबाई की। रात के अंधकार में सोनबाई सुनते ही सुनहरे कपड़ों वाली चांदी के रंग की एक पुतली उतर आती आंखों में। साथ साथ भाइयों की एक लौती बहन सोनबाई, पानी मांगती तो दूध पाती, इत्तर के हौज में नहाती, सोने की थाली में खाती, फूलों की सेज बिछाई जाती, पलक झपकते ही हर मुराद पूरी की जाती, रोज उसकी हथेली की बुरी नजर उतारी जाती। फिर एक दिन माँ बाप काशी गए और चला गया सोनबाई का भाग्य भी उनके साथ। भाइयों ने लाड लड़ाए, भाभीयों ने ताने दिए, काम करवाए, दाग दिए, छीन लिया समूचा राजपाट और भेज दिया वनवास। माँ और बाप तो काशी गए, जंगल में एक अकेली सोनबाई। मुझे पता नहीं साथ साथ भाइयों की लाडली सोनबाई अब जंगल से घर लौटी होगी या नहीं, माँ बाप काशी से लौटे होंगे या नहीं। हालांकि मेरी स्मृति वन में 30 साल से जंगल में बिलख रही है सोनबाई। बालों में फैल गई होगी सफेदी, फीका पड़ गया होगा सफेद रंग, चेहरा हो गया होगा वन हरा। शायद पी गई होगी पूरा जंगल, हरा हरा जंगल उग आया होगा भीतर, या फिर सोनबाई खुद ही एक जंगल बन गई होगी। लेकिन मुझे पता है कभी कभी यूं भी होता है, माँ बाप काशी न जाए तब भी चले जाते हैं सोनबाई के राजपाट। सोनबाई वनवास न जाए तब भी रह जाती है पूरे महल में अकेली। पैरों में पायल नहीं बल्कि पहना ही जाती है घोड़े की नाल। रोज शूली की सेज पर सोया करती है सोनबाई। महल के जंगलों में सोनबाई से बाई तक की यात्रा करते करते न जाने कितनी सोनबाई मूक वृक्ष बन जाया करती है। धन्यवाद, बहुत बहुत। सुनते ही रह गए। पोएट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, but when it comes to women poets, doubly sensitive। तो इतना सुंदर आप कहते हैं संदूक और अपना, तो आजकल कहा जाता है कि we were supposed to love people and use things, but now it is the opposite. We use people and we love things, the material things. Whereas रह जो जाएगा, it is this frame। हमारे हृदय में जो हृदय चक्र को अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत संस्कृत में मतलब होता है जो आहत ना हो पाए, और हमारे हृदय ही सबसे ज्यादा आहत होता है। तो उसका उत्तर ऋषि देते हैं कि प्रेम का अनंत स्रोत हृदय के अंदर है, उसे उजागर करना है। और वही मेरे ख्याल से आप सभी कवियों की चेष्टा है। बहुत बहुत सुंदर लगा। आगे बढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ our chair, respected chair Udayal sir, would please like to talk about the Arabic language. Would you like to talk before I introduce the keyboard में कुछ भी नहीं जानता इसके बारे में। The poet himself is such a special. पवित्र जी, I think before I was starting off your poems, if you could tell थोड़ा उद्गम, थोड़ा राइज कब शुरू हुआ, अपनी भाषा के बारे में कुछ बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। Thank you very much for giving this opportunity to read out poem in Alam language. Alam language is one of the languages in Tripura, known in northeastern India, which is very less speakers. We are about 50,000 like that in Tripura. So we've been started writing in our own mother tongue, and government
organized and it has been introduced in the primary school under the Director of Corporate and Minority Languages. So now I would like to read out. Ruchi, I think I should also, language of course has taken precedence, so I must tell people about you. For Vikram Walsamji writes in his native language, Motso, that's Halam. He also knows English and Hindi. He has written Halam grammar, some articles and words. He's an accountant by profession, and he is the secretary of Monsoon Literature and Cultural Development Society. Over to you. First of all, I will read it out in my own language, mother tongue, Halam. Which means let's be united. Iram Erning Kanti Brazil King Omlonin Sundanin Munta Omla Mulung Hatka Sumaiti Amunubang Amunaupa Amunuak Tanggal Inun Mului Panin Nunghardam Paniti Akulai Ipungai Nabi Mului Jomnin Nunghardam Tonin Eni Iram Sundaina Sumaiti Emulung Arwoinun Ezal Narat Dia Ozing Di Warpe Komasur Airam Tafsir Airam Ni Ayamrum Kaima Fi Kona Sem Tinin Yang Josonin Sundaina Ram Sumaiti. In English, in our own country and our land, without criticism and jealousy, peacefully with unity, let's be united. Regardless of gender among us, both young men and women, changing our whole lives together, move forward with new hope. And incomplete works of our ancestors, resume in unreal works with new innovation, take an initiative to make it success and rebuild our country together. If we are unitedly forwarded, we will remain always stronger, jump up out of the darkness, brighter the land with prosperity. We all, the son of the soil, dedicate ourselves patiently, move diligently and sincerely to make the land beautiful. Left one for one who deserves it later. Fountain of love is what I feel when looked upon as looks so clear and pure. Thought it would never burst. Terrified was I to lose you. Capable was your presence with me to pass this decades in just a swift thought you would never pass. Dazzling view of yours, I missed the worst. How jubilant were the moments. Thought it would never terminate. Ideas and idiotic were those pieces that dwells in me. Feeble was I in eyes of yours, blind to my steadfast and adored nature. Did I not do my best to sustain heaven and earth on my direction? It's only you beyond my potential proved myself to be unworthy. Valuing her liberty and feel, burned my feelings to ash, accepted the fate I had been given, left no one for one who loves better. Suffering. The parents of the child broken their hearts for children. The children of the family hurt their hearts for their friends. The troubles of this world are like the foods before us. The tears and rumbling pains are the character of our front feet. Poverty, hunger, and thirst are like the breath of life. Jealousy and hatred of the present are like a breath of
life. During their lifetime on earth, much of suffer and much to know. Everything that wrong and false will continue to prevail. Thank you very much. There's so much to talk, but then we have to give everybody a chance. It is so beautiful, and it comes from a heart. You just imagine being a minority in a vast sea of majority, and that वो मर्म वो दर्द वहाँ से उठता है कविता में. बहुत सुंदर. So, would you like to talk about Marathi कविता का उत्तर? और प्रत्येश जी तो आपके मित्र हैं ही. उसके बाद हम उनका परिचय देंगे. मैं तो मुंबई पर हूँ, तो बाकायदा मराठी के बारे में चंद बातें कर सकता हूँ. तो I think what happened was that in the 13th century, Sant Dhaneshwar, he made this momentous decision to write his commentary on Bhagavad Gita, not in the scholastic Sanskrit language, but in Marathi. He called it Bhavartha Deepika, and it became a landmark because then for the next 500 years followed the tradition of bhakti poetry in Marathi. Eknath, Namdev and Tukaram, of course. So this is how it seems Marathi poetry has its beginning in bhakti poetry and more particularly in Sant Dhaneshwar. S.C. Ketkar has noted that there was a parallel tradition in Marathi of elitist poetry based on Sanskrit kavya, where akhyanas or narrative poetries were being written. Moropan of 18th century belongs to this tradition. Then, of course, the grand days of the Maratha Empire. Many pavdas were written, that is, heroic ballads, and also lavnis, the romantic songs. They became popular. British colonization, it brought ushered in modernism, social reform, and nationalism. As we were discussing, in the 1920s, there was a group of poets in Pune. क्या तो इस नाम था उसका? Ravi Kiran, Madhav Julian and others. They brought in two foreign structures in poetry, Marathi poetry, the sonnet and the ghazal. It was full of Arabic and Farsi terminology. And around the same time, Pandit in the 1930s introduced free verse for the first time in Marathi poetry. After the Second World War, poets like Vibla Karandikar and Mardekar became the face of urban poetry. And avant-garde poets like the incomparable Arun Koladkar and Dilip Chitre, they made a lasting. I'm always confused. उसका कोलटकर बोलते हैं साहब को कि कोलटकर है ना. In fact, I remember Siddhartha Yashaschandra once asking himself the question that how did the Jnanpith ever miss out on a poet like Koladkar? So, this our friend here has a tough act to follow. And He finds himself very accomplished. Durgesh Sonaji started writing poetry in Marathi language at the tender age of 9. He has 3 collections of poems to his credit, which are influenced by forms like Abham, Avi, and Kirtan. His poems are published in various periodicals and magazines. He also has delivered lectures on a variety of subjects. He is a recipient of the Garima Literary Award, Narayan Surya Literary Award, Urvi Kavya Award, among many others. Durgesh Sonaji. सभी को नमस्कार. जैसे कि अभी पंढरपुर का नाम आया, तो वही पंढरपुर से मैं बिलोंग करता हूँ. मेरा जन्म पंढरपुर का है, वही
मंच पर पहली कविता मेरे पंडित को। मराठी में पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद जरा अनुवाद करता हूँ। गरजे आभाळ पंढरी मेघ विठ्ठल सावळा, गरजे आभाळ पंढरी मेघ विठ्ठल सावळा, निघे सरींची पालखी रंगे आषाढ सोहळा. गरजे आभाळ पंढरी मेघ विठ्ठल सावळा, निघे सरींची पालखी रंगे आषाढ सोहळा. पाणी झाडांवर चाले थेंबांचे कीर्तन, पाणी झाडांवर चाले थेंबांचे कीर्तन, निळ्या पोर वाळवंटी सुरू विजेचे नर्तन. अंकुरती मातीतून कोंभ जणू शिखर, अंकुरती मातीतून कोंभ जणू शिखरी, धुले हिरवी पताका शेतून. सरीतून आला देव खरा कुंडली यानी पंढरपुर में कुंडली, उसके लिए सरीतून आला देव खरा कुंडलिक झाली. आता युगे 28 बहराची मांदी आहे, आता युगे 28 बहराची मांदी आहे. पंढरी का गरजता आसमान और बादल श्यामरंगी, पंढरी का गरजता आसमान और बादल श्यामरंगी विठ्ठल जैसा, धाराओं की चलती पालकी में आषाढ़ समारोह उत्सव जैसा. पेड़ के पत्तों पर चलता असीम बूंदों का कीर्तन, पेड़ के पत्तों पर चलता असीम बूंदों का कीर्तन, नीले नीले रेगिस्तान में जैसे बिजली का बटन. मिट्टी से उगते हुए अंकुर जैसा श्रीहरि, मिट्टी से उगते हुए अंकुर जैसा श्रीहरि, हरि पताका के नर्तन में खेत बने मारे. धाराओं से ईश्वर आया धरती पुंडलिक बनी, धाराओं से ईश्वर आया धरती पुंडलिक बनी. अब 28 युगों तक बहारों का मौसम जरी. Do you understand Hindi as well? If I speak in Hindi, will you understand? Dr. Durgesh, shall we tell them about the full tale of Kundali Bhakt and Ramchandra Dogreji Maharaj has written a book where he has explained this. I hope you know this. Kundali was a Matru Pitru Bhakt. He was very devoted to his parents. So Bhagwan Vishnu, Bhagwan Vittal came to visit him. So he said, yet he lived in a small hut or quarter. He said, and there was no place, he was so poor, jagah nahi thi Bhagwan ko andar aane ki. So he threw an int, you know, what is that called? A brick, you know, and told the God to stand on that brick. Wait, I'm attending to my parents. So Vittal stand, Bhagwan Vishnu ka apna Vittal stood on that brick, and he got so tired finally waiting that he kept his hands like this. And in English this is called keeping hands akimbo. मैंने बड़ा अच्छा शब्द सीखा अंग्रेजी में, बोले हिंदी में क्या होता है, दाएं बाएं आजू बाजू वाला रख दिया, बोले he kept his hands akimbo and then he waited. So even the God comes to the person who is a devotee first of his parents' service first, you know. So this is so beautifully given in that book by Ramchandra Dogreji Maharaj. It's called Bhagavad Mahatmya. And so Vittal, I mean, we are of course, I mean, I'm not a Marathi, but we really follow the Bari. You know, आपने वरकारी का बताया ना. So that even now in Delhi it has started, you know. It's so beautiful. The मतलब आषाढ़ takes place, you know, the kind of rhythmic bells. There's a spiritual yatra they take out in that entire belt, you know. And just imagine the devotee is remembered equally. If you talk of Vittal, you will talk of Pundalik also. So that's the beauty, and how beautifully he said, you know, it's amazing, you know, the way he was describing Shri Hari's Swarup, you know, and how this, you know, the seedlings are popping up, it's beautiful. I could not stop myself. You think there are Varkaris in Delhi also? Oh yes, there's a Varkari at Islam. Can you believe it? I have Marathi friends in Delhi. But sir, what happens is, sir, like there is in Andhra, like there's a Vittal Mandir. So what they do is, sir, it's like a 3 to 5 kilometer only walk, not the original Varkari, you know, that takes place, you know, in Maharashtra. But it is symbolic, sir. You know, that's what the beauty of India, you know, in Delhi, you know, if you go to Sialkot, that's mini Bengal. You know, if you go to Mayur Vihar, that's mini Kerala. So that's how the Marathi people are. Marathas है तो sooner or later
आक्रमण करने ही वाले थे। Sir, I have also translated, and my contribution is there is a book called Maratha Itihas. Actually, Maratha has a lot of relation to the French settlements also, which is a lesser known research aspect. So that book is out by ICHR, Indian Council for Historical Research. So I'm also with you. But so beautiful, could not stand, could not stop myself. Yes, sir. Suresh ji. Thank you. डायरेक्टली हिंदी अनुवाद जी। अभी हमारे सभी के हाथों में स्मार्टफोन्स हैं, तो उस पे बहुत सारा सोशल नेटवर्क होता है, तो उसके ऊपर भाष्य करके मुक्त छंद वाली लिखा है। इसका अनुवाद किया है मराठी की जानी मानी ट्रांसलेटर है डॉक्टर सुलभा ने, उन्होंने ये ट्रांसलेशन किया है। मैं पढ़ता हूँ, देखिए कैसे लगता है। फेसबुक के वॉल पर सूखे का एक बेहतरीन फोटो अपलोड कर वह इंतजार करता रहा कमेंट्स की बरसात का। फेसबुक के वॉल पर सूखे की एक बेहतरीन फोटो अपलोड कर वह इंतजार करता रहा कमेंट्स की बरसात का। उसने पेज को रिफ्रेश भी किया और वह देखता ही रह गया लाइक और कमेंट्स की मूसलाधार बरसात। उसने पेज थोड़ा सा रिफ्रेश भी किया और वह देखता ही रह गया लाइक और कमेंट्स की मूसलाधार बरसात। सचमुच हम कितने सोशल होते जा रहे हैं इस नेटवर्किंग के ज़माने। सचमुच हम कितने सोशल होते जा रहे हैं इस नेटवर्किंग के ज़माने में। सभी समस्याओं के लिए हम चाहते हैं इस तरह के ऑनलाइन जवाब। सभी समस्याओं के लिए हम चाहते हैं इस तरह के ऑनलाइन जवाब, और चैट करते करते अपनी ही संवेदनाओं का करते हैं हम एप्रीविएशन। और चैट करते करते अपनी ही संवेदनाओं का करते हैं हम एप्रीविएशन। स्मार्टफोन की छोटी सी स्क्रीन पर क्रिया प्रतिक्रियाओं के दिखते रहते हैं ग्रीन, ऑरेंज और आइकॉन्स। भावनाओं को पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं इमोजीज। कितनों के साथ हम चैट करते रहते हैं और ऑनलाइन सुख दुख की बातें करते हुए अपने इर्द गिर्द की दुनिया से होते रहते हैं ऑफलाइन। और आखिरी कविता पढ़ता हूँ। जैसे मराठी में मंगेश पाडगांवकर जो बहुत बड़े कवि है, उन्होंने बोलगाणी का एक फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया था। प्रेम बढ़ते प्रेमच कर पिला अर्था है सुख बढ़ता है पिला अर्था सरला है। तो वो फॉर्मेट की ये कविता है कि नवा सूर्य, जिसको हिंदी में कहेंगे नया सूरज। छोटी सी है, देखिए मराठी का एक स्टांजा बताऊं और उसके बाद उसका अनुवाद करता हूं कि अंधारच अंधार भोवताली म्हणून घाबरून का जायचं। अंधारच अंधार भोवताली म्हणून घाबरून का जायचं। खास खळगी असतातच ना वाटेत तुलाच नाम थांबायचं। चारों ओर धूप अंधेरा इसलिए क्या डरना चाहिए। चारों ओर धूप अंधेरा इसलिए क्या डरना चाहिए। रास्ता उबड़ खाबड़ होगा ही, यूं ही क्यों रुकना चाहिए। पिछले पन्ने से आगे के पन्ने पर सहजता से जाना आना चाहिए। पिछले पन्ने से आगे के पन्ने पर सहजता से आना जाना चाहिए। यूं ही ठंडी आह भरकर नहीं दोस्त, हंसते हंसते जीना आना चाहिए। अंधेरे के सीने में भी छुपी होती है रोशनी। अंधेरे के सीने में भी छुपी होती है रोशनी। अपने अंदर का गहरा दिया दमखम के साथ जलना चाहिए। मन पर छाई कालिमा जब चेतना से दूर होगी, मन पर छाई कालिमा जब चेतना से दूर होगी। सच कहता हूं दोस्त भरोसा रख, सच कहता हूं दोस्त भरोसा रख। फिर नए सूरज की नई नई भोर होगी, फिर नए सूरज की नई नई
Ji has authored 3 collections of poetry, A Bucket of Rain, Yearnings, and From the Broken Earth, besides a Naga folktale children's book, Shobosho. She has also co-authored several books. Her latest work, Death Rituals, An Insight into the Naga Ancestral Religion, appeared in the Routledge publication in 2023. Rita Krochaji is a recipient of the Kohima Press Club Impact Journalism Award and has been on the National Foundation for India Media Fellow 2021. She is a journalist by profession with over 15 years of experience. Rita ji, it's a very, very interesting nomenclature, Northeast English. If you would like to tell us a bit about its history, origin, and its progress, it would be really nice before you delve into your poems. Please switch on the mic. Yeah, so I think most of us who were born and brought up in Nagaland, especially because we attend English medium schools, our medium of conversation has always been English. And so I think it was natural for us to pick up writing in English. Is Northeast English different from English for the rest of India? Because the term is in the Northeast English, which is why I was wondering. Or it's the same? I think it's the same. I think how different it's not as English here. So I will read from my third collection of poetry titled From the Broken Earth, which is actually an outcome of the COVID-19 pandemic. No country across the world was spared from the fear, and I think more than ever we clung to life despite the anxiety and loneliness brought about by the pandemic. Personally, I turn to poetry because expressing myself in writing always has a way of making me feel better. Through the darkest days of the pandemic, I found hope in the goodness of nature and God's divine providence. Even when everything seemed to have come to a standstill, flowers still bloom and seasons live their time. The impermanence of life was made even more prominent by COVID, but I sought unparalleled joys in and comfort and incorporated them into my writing. So all of the poems that in the collection are untitled, and most of them are short, so I will just read them one after the other. I said I will come back in spring to watch you rise against the blue skies, to seek the soil where your roots grow and produce such pretty blossoms, to rest under your shade and wait for winter's harsh sun to pass, to smell the earth replenished by the slow spring rain. But while you still bloom in your splendor, life has slowed down here, and we are just learning to stay home, away from all the lives we knew and all the things we've become attached to. Now the city slides into dark, in silence, and we linger in our own isolated worlds, hoping for a day when this pandemic will pass. Next one is, but isn't it a brave thing just to stay home and keep yourself safe, to forego little pleasures and be thankful that you are alive, that you may still be in one, but not in meat. This poem was written as a result of me getting COVID as well, and I completely lost my sense of smell just literally here. So because these days I sit and wonder, when can I smell the flowers again, or treat myself to the delicious smell of mom's cooking? Because really, what joy is there in eating otherwise? All I do now is open the coffee jar and try to get a whiff of it, or stare out my window in longing to get that earthy smell after the rain, and then maybe watch the sunset somewhere far in the horizon, grateful still that perhaps the worst is over. Wow. I saw there was a funeral yesterday. I went to one this morning in the pouring rain, and I think to myself, they are no longer the same. Will these dark times even change the way we grieve?
written for an uncle who passed away during the COVID pandemic. Will there be flowers to line your path, sunshine to greet you where you are? Will there be laughter, joy, happiness? Will you remember these familiar days? Like the chair we sat upon one fine afternoon, not so long ago, with 2 cups of tea placed between us, and you wore that expression like you always did when you are about to start a story from somewhere. Maybe I didn't tell you, but I swore to write it in my heart. I was collecting pages still, thinking there would be another day. I could walk in and find you, taking a stroll in your front yard, amidst the blooming flowers. We did make plans, didn't we? How easy it was to say and think, there will be another time, another day, to pick stories where we left it. But nothing is ever here forever, and you were gone just too soon. Now I sit with questions inside my head, knowing only one thing for sure, that life will never be the same. I'll read one last poem which also reflects the hopeful person in me. Shall we still carry hope in our hearts, even when they leave unexpectedly, one after the other, day after day, as young as they were, as happy as they were, only gone before their time? But even then shall I hope and wait. I will still choose this uncertain life again and again. And we have our last poet for the session, Charumitra. Languages in South Asia. It dates back almost to the Indus Valley civilization, and it's been passed down generations through Sikhs, oral traditions of reciting and singing poetry. Partition 1947 paralyzed Sindhi literature, as most of the educated Sindhis, they left Pakistan and settled in India. Now it was not possible to arrange a place large enough to accommodate in India all these cities at one single place. So they got dispersed, and they adopted the motto, no home to live, but the whole of India is ours. Separation from the homeland involved a hard life, lived sometimes in camps and barracks, and sometimes they were not very hospitably received by the original inhabitants. Despite all that, the Sindhi community transformed itself from Sharanarthi to Purusharthi. They made efforts to strengthen and preserve their cultural identity, for instance, by launching several Sindhi medium schools and colleges. To put it in a nutshell, I'll just quote these lines from T.N. Vaswani's poem, Asi Sindhi. He says, we Sindhis feel elated when in the national anthem we hear Punjab, Sindh, Maratha, because it reassures us that we, who God chose for maximum sacrifice, the nation hasn't forgotten. Namaskar, दोस्तों. Charji, if you permit, I will speak a little about you. Charumitra is a doctor by profession. She's a poet and prose writer. She's proficient in Hindi, Marathi, Sindhi, English, and a little bit of Urdu, and has the distinction of reading and writing Sindhi Arabic script. She has translated and edited a few books of prose and poetry, yoga, Ayurveda, and a diet consultant. Charumitra
Vichari is a hardcore music and poetry lover. Her creativity in anchoring poets' meets and musical shows is well apparent. Over to you, Vichari. Thank you so much, ma'am. मेरे सारे प्यारे शब्द मित्रों को मेरा नमस्कार और आज के चेयरपर्सन ठाकर सर को मेरा सादर नमन और साहित्य अकादमी का आभार मानते हुए मैं अपनी कविता पठन शुरू करती हूँ। मेरी मीठी मिश्री सी मातृभाषा सिंधी में कुछ लाइनें और उसके बाद 3 कविताएं हिंदी में। पहली कविता का शीर्षक है खुमारी। मखमूर अखड़िन सा मुल्की तू मुखे चयो को हिक भेरो पिया चाया थो दो साण जिया चाया थो पर जे साण हुंदी तो त ईमान थिरण जो इम्कान आहे। तिरकण ऐं थिरकण जो भला कंहिं कम वक्त के भव हुयो। तिरकण ऐं थिरकण जो भव भला कंहिं कम वक्त के हो। अला न व्यासी न पीतोसी न व्यासी न पीतोसी ऐं न ई वरी कॾहिं थिरकियासी। उमिरि सारी गुज़री इन ख़याल जी खुमारीअ में। इन ख़याल जी खुमारीअ में हिंदी में प्रस्तुत करती हूँ। मदमस्त आँखों से मुस्कुराकर कहा था तुमने एक बार। मदमस्त आँखों से मुस्कुराकर कहा था तुमने एक बार। पीना चाहता हूँ बहुत पीना तेरे संग जीना चाहता हूँ पर साथ होगी तुम तो बहकने का इम्कान होगा। बहकने का खौफ भला किस कमबख्त को था। ना गए ना पिया और ना ही बहके कभी। हाय उम्र सारी गुजरी इसी ख्याल की ही खुमारी में। उम्र सारी गुजरी इसी ख्याल की ही खुमारी में। दूसरी कविता है एक सफ़ा। सफ़ा का मतलब है सिंगल पेज पन्ना। एक सफ़ा बरसों पुरानी मेरी डायरी से हो गया एक सफ़ा। याद नहीं पर कब क्या लिखा था उसमें। हर दिन उस डायरी का फटाश छोड़ मुँह चिढ़ाता रहता मुझे। हर दिन उस डायरी का फटाश छोड़ मुँह चिढ़ाता रहता मुझे। डायरी के सारे भरे पन्ने यहाँ तक कि खाली पन्ने भी मेरी छटपटाहट पर हंसते रहे। दिन ब दिन बढ़ती रही मेरी बेचैनी। फिर अचानक एक दिन मिल गया वो सफ़ा। अचानक मिल गया वो सफ़ा। समय की धूल से धुंधलाए थे शब्द। धूल हटाकर टटोला लफ्जों को तो क्या पाया। खोकर पाए हुए शब्दों में था पाकर खोए हुए रिश्तों का बयां। खोकर पाए हुए शब्दों में था पाकर खोए हुए रिश्तों का बयां। सफ़ा पा जाने से और भी बढ़ गई मेरी बेकरारी। और भी बढ़ गई मेरी बेकरारी। मैं 4 कविताएं सोच रही थी पर समय के अभाव में फिर इसी कविता चौथी पढ़ती हूँ जो कि थोड़ी दीर्घ है। कविता का अनुमान है वो शाम। गुलजार साहब को समर्पित करती हूँ। हम सबके बहुत ही चहेते शायर और गीतकार तो हैं ही। तो कविता का शीर्षक है वो शाम। 50 की हुई थी जब वो तो उसके जन्मदिन पर किसी ने गीत पेश किया था उसके लिए। वो शाम कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी वो आज भी करीब है। बरसों पीछे छूटे हुए मंजर को दोहराने मन उसका चला अधूरे माजी में। बरसों पीछे छूटे मंजर को दोहराने मन उसका चला अधूरे माजी में। जब कोई खास रहा था उसके आसपास और आज ये शख्स उसे खास लग गया। और आज ये शख्स जो गा रहा था उसे खास लगा। तो क्या ये करीब आने लगा है। तो क्या ये करीब आने लगा है। वो भी तो शायद अपने ही किसी अधूरे माजी में खोया हुआ था। आज उसके जज्बात खुल रहे थे खिल रहे थे। आज उसके जज्बात खुल रहे थे खिल रहे थे। 2 अधूरे जज्बे एक दूसरे के ना होकर भी एक हो रहे। 2 अधूरे जज्बे एक दूसरे के ना होकर भी मुकम्मल हो रहे थे। अपने अपने माजी के अधूरे को पीछे छोड़ एक दूसरे की रूह में मुकम्मल हो रहे थे। जहाँ झुकी हुई निगाह में कुछ ख्याल था तो दबी दबी हंसी में गुलाल भी था।
पर्दे पर नायक जब गा रहा था तो उस नायिका के लिए नहीं था ये गीत, उस नायिका के लिए नहीं था ये गीत, अपनी एक याद के लिए था। और नायिका ही तो अपने आप में खोई किसी और तस्वर को लिए जा रही थी। दोनों घिरे थे अपने अपने माजी पे। माजी 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 जो बीत तो चुका था पर गुजर नहीं पाया था। माजी जो बीत तो चुका था पर गुजर नहीं पाया था, अब भी दिल की गहराइयों में था। वो शाम तो थी ही अजीब, वो शाम तो थी ही अजीब, पर ये शाम क्या कम अजीब है, ये शाम क्या कम अजीब है। अजीब शाम के बारे में कहा, हमें लगता है ये सुबह बहुत अद्भुत थी। मेरे ख्याल से आज के आनंद की जय, और अपने हम सबके लिए आई थिंक वी शुड हैव एन अप्लॉज। I request the chair to give the final मुझे comments. ऐसा लगता है रूबी जी कि आप इतनी पब्लिक पर्सनालिटी है तो आप सब सोडा जैसे अगर हैं तो आप विस्की कर रहे हैं। सर मैं क्या बोलूं, पता नहीं आपने लाजवाब कर दिया मुझको। Would you like to for a second would you like to give a comments and फिर हम एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए देवेश नाम है? हाँ अगर ठीक है हम भूल जाते हैं क्योंकि हमें और आप सब चाहें तो मुझे कविताएं दे सकते हैं। हमारी हिंदी और अंग्रेजी की पत्रिका में जब वो छपेंगी आपको इत्तला हो जाएगी, आपको पूरा का क्योंकि नाम तो होगा ही सही। जी सर आपको कुछ कहना चाहिए? वैसे तो बहुत सुंदर रहा सत्र, इट वाज पार्टिसिपेटिव इंटरैक्टिव सेशन। I can make a few comments or I can recite my poem. कैसे आप करेंगी? सर सोने पे सुहागा लेगी और कुछ आपकी कविता सर कवि से कवि को बोलो कि कविता न सुनाओ, मतलब साहित्य पाप की भागी नहीं बनना चाहते ऐसे लगे। I'll recite two poems, one a translation in English, the other a translation in Hindi. और फ्लेवर के लिए शुरू में चंद पंक्तियाँ ओरिजिनल गुजराती लैंग्वेज में। कविता का शीर्षक है फैंसी ड्रेस। 40 वर्ष से हमें वो रियूनियन होती है ना, स्कूल रियूनियन, 40 વર્ષ से અમે શાળાના મિત્રો મળ્યા ફેન્સી ડ્રેસ પાર્ટીમાં। કોઈ મિયા ફુસકી બનેલો, કોઈ તબા ભટ્ટ, સુજાતા સેન્ડ્રેલા, નટુ હેડમાસ્ટર અને હું બનેલો ખુદિયો રાક્ષસ। Now I read the translation in English. Fancy dress. After 40 years, we met, buddies from school days, at a fancy dress party. One was dressed as Humpty Dumpty, another as Robin Hood, Susan as Cinderella, Bob was the headmaster, and I was the hunchback of Notre Dame, and without makeup, mind you. Now the chatter starts. Remember that toilet guys on the first floor? Some wise guy had drawn a line on the wall and scribbled, if you can sprinkle up to here, go join the fire brigade. Another one says, Frederick, that fatso, how the science master caught him. What's with this blank notebook? So Freddy says, sir, you wrote on the blackboard. I copied in my notebook. But then you cleared the blackboard. I cleared my notebook. This Freddy used to open a bottle of Coke with bad teeth. He dare not laugh now, for fear the lecture will follow. And all he knew maths tables backwards. Today, he does not remember his own name. And Susan, she used to laugh like wedding bells. A spinster here.
And Carl, that high jumper, oh, he jumped from the 9th floor. And Helen, you remember Helen? She wore a butterfly on her blouse. She has only one breast now. We partied till midnight under the mask of childhood. For a while, we cheated death. And the final one is टाइटल अयोमुखी। तो अपने वाल्मीकि रामायण में दो अरण्य कांड में दो भिन्न पात्र हैं, एक तो है शूर्पणखा और दूसरी है अयोमुखी। दो भिन्न व्यक्तियां हैं, तो ये शीर्षक है अयोमुखी। चंद्रमुखी नामक 26 वर्ष की युवती ने जब शारीरिक संबंध से इनकार कर दिया तो उसके पड़ोसी दत्ता पाटिल ने उस पर एसिड छिड़क दिया था। चंद्रमुखी को जले हुए नाक के साथ मुंबई के रिलायंस अस्पताल में दाखिल कराया गया था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर। सीता की खोज में दक्षिण दिशा जाते हुए राम और लक्ष्मण ने एक गुफा देखी, जिसके द्वार पर खड़ी एक राक्षसी मृग का भक्षण कर रही थी। काम के वशीभूत होकर उसने लक्ष्मण को आलिंगन किया और बोली, हे वीर, मैं अयोमुखी हूं, तू नदी के तट पर मेरे साथ रमण कर। तो लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। और अंतिम स्टांजा। राम सेतु के एक छोर से चंद्रमुखी निकली और दूसरी छोर से अयोमुखी। दोनों ने एक दूसरे से पूछा, तुम्हारी ये दशा क्यों हुई? तो एक ने कहा, क्योंकि मुझे प्रेम नहीं करना था। और दूसरे ने कहा, क्योंकि मुझे प्रेम करना था। Just 1 or 2 points, क्योंकि मुझे लीला फाजली का ये शेर याद आ रहा है कि कभी कभी यूं ही हमने अपने दिल को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। तो जैसे few thoughts कि गौतम जी ने और पन्ना ने दोनों ने अपने अपने तरीके से ये बापू को ला करके इन्होंने वो नगर के बीचों बीच से ट्रेन जाती है और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की किताब का भी जिक्र किया उन्होंने। तो राजकारण आना चाहिए कि नहीं पोएट्री में, तो वो पर्सनल चॉइस है, बेशक आ सकता है अगर पोएट्री को मेंटेन किया जाए। एक किस्सा याद आ रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और रामधारी सिंह दिनकर वो मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो एक बार जीने पे चलते हुए पंडित जी के पैर लड़खड़ा गए, तो एकदम से दिनकर जी ने उनको संभाल लिया। तो पंडित जी बोलने लगे, दिनकर अगर तू नहीं होता तो मैं धड़ाम से गिर जाता। तो दिनकर जी कहने लगे कि जब राजकारण लड़खड़ा जाता है तो साहित्य को ही उसको संभालना पड़ता है।
सोनबाई की भी एक कविता कही पन्ना ने, तो अगर कोई नारीवादी कवित्री इधर होती तो जरूर पूछती कि ठीक है कि भाई ने अन्याय किया, भाभी ने अन्याय किया, माता पिता, लेकिन उनका आश्रय लेने की भला जरूर क्या सोनबाई खुद अपने आप को नहीं संभाल सकी? हमने कुछ भलाम में भी कविता अच्छी पढ़ी सुनी। इसमें एक ऐसा I'd like to share a thought with you कि बेशक उपदेश भी आ सकता है कविता में, लेकिन वो कैसे वो कुंतक कहता है ना कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, मतलब एकदम प्रत्यक्ष रूप से न हो, और जैसे कांता समेत एक पत्नी स्नेहपूर्वक बैठ करके अपने पति को कुछ एक दो बातें समझा देती है, इस तरह व्यंजना के साथ वो। और अंतिम में रीटा जी ने कोविड विषय कुछ छोटी छोटी कविताएं सुनाई, एंड शी वेरी राइटली सेड दैट व्हेन आई लूज ऑल होप बिकॉज ऑफ कोविड एंड सच difficulties, I turn to poetry. तो याद आती है, we have read poems of the Polish Nobel laureate Wisława Szymborska, and she's written a small poem called Some Like Poetry. Sure. And she says, some like poetry, 3 stanza hai. One starts with some, second starts with like, third starts with poetry. Some like poetry, some, not all, not even the majority of all, but the minority, not counting schools, where one has to, and the poet themselves. There might be 2 people per 1,000. Then she says like, but one also likes chicken soup with noodles, old star, one likes stroking a dog, and finally she says poetry. But what is poetry? Many shaky answers have been given to this question, but I don't know, and I don't know, and hold on to it like a sustaining really. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल और दिमाग में एक अजीब सी जंग है, मेरे भीतर ही कोई मुझसे ही तंग है। दिल चाहता है आपको सुनती चलो, दिमाग कहता है कि अब टी और कॉफी ब्रेक है, एक हमें साथ में ग्रुप फोटोग्राफ लेनी है, और क्योंकि हमारा अगला सत्र यहीं पर है जिसे हम ही कंडक्ट करेंगे, तो अगेन द नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्टर्न राइटर्स वीक, बट देयर इज अ डिस्कशन ऑन द कंटेम्पररी लिटरेरी ट्रेंड्स जो 12 बजे शुरू होगी। आपको नीचे जाना होगा चाय कॉफी के लिए, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ लेंगे। दिनेश आए, बहुत बहुत शुक्रिया, आज के सत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
Namaskar. Sahitya Academy welcomes you all to the Northeast and Western Writers Meet discussion on contemporary literary trends. This is a momentous occasion for us. Every year we celebrate Sahityotsav, the Sahitya Academy's annual festival of letters, but this year we complete 17 years. And therefore there's this air of palpable excitement. We're meeting all our friends from all across India, and this is of course an epoch-making and a record-breaking event also, because we have more than 1,000 writers who have assembled here. Each one of you is precious for us. Each one of you is very, very respectable and a valuable asset for the Academy. I, Rumi Malik, welcome you all to this Northeast and Western Writers Meet discussion on contemporary literary trends. At the outset itself, I would request all of you to please either put your phones on silent mode like I have, or switch them off, and please refrain from discussions. It is extremely disrespectful to carry on a separate seminar of your own. The mics are very, very sensitive, and this is live streaming going on, and at outset, I would like to invite the chair sheet Y.D. Thongchi sir to please occupy the chair. And shall we have a round of applause for the chair? Followed by Shri Mridul Haloi ji from Assamese. If you could, Mridul ji, if you could take a chair here. Mridul Haloi. Mridul ji is here. We will further move on. Jayendra Singh Yadav ji is there in Gujarati, but Jayendra ji will have to sit here. There is a bit of a reshuffling because we all need to be together, for the session. Then we have Irong Ravindra Singh ji from Manipuri. Irong ji, if you could just come here. Yes. And then we have Asaram Lopez ji right here, our Marathi writer. And Kalavar Mutwaji from Sindhi. Kalavar Mutwaji, please come closer. Now the person, Mridul Haloi ji from Assamese, is he here? Is he present? Has anyone seen him? I have not known him. Oh, you have not even seen him? Okay, alright. So that's perfectly fine, and I would like the chair to kind of give the opening remarks. But first of all, I must also tell you about Sir. Y.D. Thongchi sir is an eminent Assamese writer and scholar. He has more than 10 published books to his credit. His books have also been translated into many Indian and foreign languages. Many of his stories have been made into TV serials. He is the recipient of the Sahitya Academy Award, Kalaguru Vishnu Rava Award, Kulchand Khandelwal Award, Asha Bharti Award, amongst many, many others. Like I said, we will refrain from any small talk. Each writer is important, just like you would like yourself to be heard to unto others as you would like them to do to you. It's my humble request, switch off the phones or keep them on silent mode. Try to, since we have 2 ears and 1 mouth, we should use our ears twice as much as we use our mouth. So it's really a humble request, and I request the chair, Honorable Chair, Thongchi sir, to please give his opening remarks about the meet, what it is all about. Good afternoon to all. First of all, I will express my gratitude to Sahitya Academy for inviting us in today's this seminar session. In fact, it is the 17th foundation year of the Sahitya Academy, and Sahitya Academy for the first time has organized such a big literary event. Except the literary event which was organized at Simla and at Bhopal, Sahitya Academy had never organized such a big event at ATP. So I thank Sahitya Academy for giving us this opportunity to have this session, important session, that is the contemporary literary trends of Northeast and Western literature. Western Indian literature. When we talk about India, it is a vast country. Right from Northeast, from the land of the rising sun. I belong to the land of rising sun, that is Arunachal Pradesh. To the westernmost, it is a big distance, long distance. And although we call that it is a diversity, unity in diversity, we find very little unity
we have more diversity than we have the unity. We do not know each other, we do not care about each other. It has got so many languages, so many literatures. Every language has its own literature, and we hardly know, Northeastern people especially, hardly know the literature of the Western India, of South India, of Northwestern India. And when we talk about the Western literature, Western Indian literature, it is the Marathi literature, it is Gujarati literature. You can include even Northwestern, because Gujarat is also in the West, Rajasthan is also in the West. Then there is a Konkani, Sindhi, which we Northeastern people never hear that there was a language called Konkani or Sindhi. So we know very little about this, and likewise the people of Western India hardly knows about Northeast India. Northeast India has got so many tribes, so many languages. When you talk about Northeastern India, you talk about only Assam and a little bit about Manipur, which has got a very rich literature. Apart from that, there are so many languages, and in every language, the literature is coming up. And with the time, the trend of the literature is changing day by day. Today, we will hear about the changing trends of the literature from the writers from the West, because we wanted to know more about Western literature than our own literature. And for Northeastern region, there's only one participant from Assam. The participant has not arrived till now. So let us hear, and I have come here to learn more than what I wanted to say. I do not have anything to say, because Arunachal Pradesh does not have any literature till now. It is just coming up. We have just started the literature, writing literature in Arunachal Pradesh. So, And so I- why is that? Is it because of the kind of insurgency kind of conditions? Is it because of the instability in the region that literature could not come up? no, it is not that. Mm-hmm. You see, Northeastern region is full of heterogeneous tribes, Yes. different tribes, and tribes did not have script. Yes. When you do not have script, you cannot think of the writing. Right. And when you do not have written literature, how you can say that there was a literature? Absolutely. So, first of all, you have to have a script. Mm-hmm. Manipuri has script, Assamese has script, so they have the literature. They are having rich literature. Mm-hmm. But we did not, in Arunachal Pradesh, we have more than 100 languages, small tribes. Yes. Even if you invent a script, you won't be able to create the literature of your own one. Because the population is so less. Sometimes my own tribe, I don't write in my own language. Because if I write in my own language, there is hardly 3,000 people. Out of 3,000 people, 10 people will read. So I cannot think of writing in my own language. Right. That's why I started writing in Assamese. Oh. Assamese was the language which was taught in our house. It was a medium instruction in the school. So we started writing in Assamese, and now these new writers from Arunachal Pradesh, they have started writing in Hindi and in English. I can say, yes, Kerala, Dikha Kerala, she has written in English. Okay. Her book has been published poem. It is in English. It has to be in Hindi, it has to be in English, it has to be in other language, not in Arunachal. So there's just one point that I would like to ask before I asked him to read his paper. Sir, is there any oral literature that needs to be documented, oral traditions in your Documentation is going on. is going on? That's It's one. going on. Documentation is going on, and the new generation of Arunachal Pradesh, they are very much aware of all these things. Of the documented oral literature. There is a lot of work is going on. Wonderful. So with these encouraging words, I think we should begin the session. Our first participant is
Vijay Singh Yadav ji. He is from the Gujarati language. Yes. He is an ardent academician, a dexterous administrator, and a flawless speaker. Currently, he is serving as Member Secretary of Gujarat Sahitya Academy, Youth and Culture Department, Government of Gujarat, and the Director of Language. He is the additional charge of the Gujarati Language and Literature, Government of Gujarat. He was felicitated with a special honor by the Governor of Gujarat and also received the National Talent Search Award by Indian Accounting Association and Dr. APJ Abdul Kalam Vedant Excellence Award. Jainil Singh Yadav ji, over to you. We should have a round of applause. Thank you very much, Ruby ji. Honorable Thauchi ji. We have a chairman of Gujarat Sahitya Academy, Dr. Bhagyesh Jha sir. We may have a huge round of applause. गुजराती साहित्य के बहुत जाने माने साहित्यकार हैं, गुजराती भाषा के साहित्य अकादमी के कन्वीनर भी हैं, साथ में हसित मेहता जी, चंद्रावाड़िया जी, ये भी हमारी गुजराती भाषा के हमारी समिति में है, अजय सिंह चौहान जी और आप सब भाई बहन साहित्यकार बंधु भगिनी। आज समकालीन गुजराती साहित्य के विषय में मुझे बात करनी है। आज बहुत अच्छा दिन है, आज 12वीं मार्च है, जब गांधी जी ने दांडी यात्रा गुजरात की पावन भूमि साबरमती से प्रारंभ की थी। उस समय भी गांधी जी को किसने कहा था कि ये दांडी यात्रा करनी चाहिए? गांधी जी ने कहा है कि जब तक मैं स्वतंत्रता लेके नहीं आऊंगा, आश्रम में फिर से वापस नहीं आऊंगा। गांधी जी ने ये वाक्य बोला, उससे पहले एक कवि ने वाक्य बोला और वो कवि ने कहा था, आओ न आश्रम में बड़े नहीं स्वतंत्रता। गांधी जी को प्रेरणा देने वाला एक कवि था, उसका नाम कृष्णलाल श्रीधर था। तो ये समकालीन गुजराती कविता बहुत सालों से लोगों को प्रभावित कर रही है, जनजीवन को तो प्रभावित करती ही है, लेकिन गांधी जैसे एक महामानव को भी प्रभावित करने में गुजराती कविता का एक महत्वपूर्ण योगदान है। एक छोटी सी चंद पंक्ति पढ़कर मैं इस बात का प्रारंभ करता हूँ। हमारे कवि थे सुरेश भला, उन्होंने गुजराती कविता के विषय में लिखा है कि कैसी गुजराती कविता की यात्रा है। वो कहते हैं कि सदी सदी थी वही रही छे एक सुवाળી नदी, एक हुंफाળી नदी। सदी सदी थी वही रही छे एक सुवाળી नदी, एक हुंफाળી नदी। नरसैयाना वेण वेणમાં વહ્યા કરે, મીરાબાઈના નૈણ ઝરમર ઝર્યા કરે। રસિક વલ્લભ દયારામની તરી રહી ગરવી, પ્રેમાનંદના આખ્યાનો ને અખાની ધકતી વાણી। દલપત નર્મદ અર્વાચીનની ક્ષિતિજ ઉઘાડે શાણી, કાંત કલાપી ઠાકોરની તો વાત નિરાળી નરવી। સદી સદીથી વહી રહી છે એક હુંફાળી નદી। गुजराती साहित्य को उन्होंने नदी जैसे कहा है, जैसे नदी बहती रहती है, ऐसे साहित्य जो है वो विविध माध्यमों के द्वारा बहता रहता है। ऐसे उन्होंने हमारे बहुत नामी प्रसिद्ध लेखकों को अंजलि देते हुए उन्होंने एक कविता लिखी है। जैसे गांधी युग आया, तब गांधी युग में गांधी जी के ऊपर गुजराती कविता का प्रभाव हुआ और गांधी जी का प्रभाव बहुत गुजराती साहित्य में हुआ। सभी फॉर्म्स में, आप कविता की बात करें, आप उपन्यासों की बात करें, सभी की बात करें। दूसरा एक प्रभाव गुजराती साहित्य में वेस्टर्न वर्ल्ड का भी देखने को मिलता है, पश्चिम का भी बहुत बड़ा प्रभाव। इसलिए देखिए कि हमारे यहाँ नॉवेल को नवल कथा कहते हैं, दूसरी भाषा में ऐसा नहीं। जैसे बाणभट्ट की कादम्बरी है, उसके माध्यम से हमारी परंपरा में उसको कादम्बरी कहा जाना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में, मराठी में नवल कथा को कादम्बरी भी कहते हैं, लेकिन गुजराती में सीधा उसको स्वीकार किया हमने अंग्रेजी में से नॉवेल टू नवल कथा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि जिसके माध्यम से गुजराती साहित्य जो है पश्चिम से भी प्रभावित हमें देखने को मिलता है। मध्यकालीन गुजराती साहित्य, फिर अर्वाचीन साहित्य में बहुत समय नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं करता हूँ, सीधा मैं समकालीन पर आना चाहता हूँ। लेकिन जब हम समकालीन की बात करते हैं तो आपको पश्चात युग में जाना पड़ेगा कि कोई भी समकाल ऐसा नहीं होता जिसके ऊपर उसके भूतकाल की असर न हो, वरना वो समकाल नहीं है। क्योंकि इवेंट जो है, जो भी इवेंट्स होती है उसके ऊपर वो किसी भी चीज का पुनरावर्तन नहीं होती, ऐसा हमारे यहाँ ख्याल है। तो पिछले 25, 30, 50 साल
हम नहीं जाएंगे तो उसके माध्यम से हमें पता चलेगा, उसमें जाएंगे तो कि कैसे गुजराती साहित्य को गांधी युग ने प्रभावित किया है। ऐसा रामनारायण विश्वनाथ पाठक ने कहा था कि जैसे सूरज उगता है तो सूरज के उगने से पृथ्वी का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं होता है कि जो सूरज के उजाले से व्याप्त न हो जाए। ऐसे ही गांधी का प्रभाव गुजराती साहित्य में है कि कोई भी फॉर्म ऐसा नहीं है कि जो गांधी विचार से ऐसे अछूता रह गया हो। तो साहित्यकारों का एक स्वभाव है कि किसी भी चीज को अगर देखना है तो उसको अखंडता में भी देखना, और फिर उसका अगर विवेचन करना है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर भी देखना। आज हम ऐसे ही कुछ देखेंगे कि कैसे गुजराती साहित्य जो है उसके ऊपर समकालीन ट्रेंड्स में क्या क्या चल रहा है। पहले गुजराती कविता जो थी गांधी जी के समय में, वो मेघाणी बहुत प्रभावी कवि थे हमारे झवेरचंद मेघाणी, आप सबने भी नाम सुना होगा। गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए प्रेरणा देने वाले भी मेघाणी थे। तो उन्होंने कहा छेल्लो कटोरो झेर नो आपी जजो गाकू, ऐसे कह के उन्होंने गांधी जी को उकसाया और वो फिर गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब सुंदरम ने कहा कि मेघाणी जो है वो खुले मैदान के कवि है। तो तब सभी कविताएं ऐसी थी कि जो राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाली थी, समाज को सुधारने वाली थी। चाहे आप नर्मद को ले लो, चाहे मेघाणी को ले लो, ऐसे बहुत सारे कवियों ने समाज सुधारने का काम कविता के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का काम किया था। वो कविता, वो गुजराती कविता वहां से निकलकर फिर हमारे घर तक आती है, घर में ड्राइंग रूम तक आती है, ड्राइंग रूम में से आज बेडरूम तक भी पहुंच गई है। तो जो गुजराती कविता का जो विस्तार है, जो सर्कल है, वो ऐसे कहें कि फ्रॉम ऐसा हम कह सकते सामूहिकता से एकत्व तरफ आगे बढ़ रहा है। सो इंडिविजुअलिज्म जो है वो आज गुजराती साहित्य में बहुत देखने को मिलता है। उसका अर्थ ये नहीं है कि हम गुजराती साहित्य में संकीर्ण होते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ये संकीर्णता नहीं है, लेकिन एक फोकल पॉइंट पर, फोकल पॉइंट क्या है? तो मनुष्य। अंत में तो साहित्य किसके लिए? मनुष्य के लिए है। पूरी सृष्टि में सबसे बहुत बड़ा, पृथ्वी के निसर्ग में सबसे महत्वपूर्ण जो कोई इकाई है वो मनुष्य है। तो उस मनुष्य के लिए साहित्य के लिए मनुष्य, वो बातें अक्सर होती रहती है। लेकिन इंडिविजुअलिज्म जो आया उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव ये रहा कि मनुष्य के अंदर जितना भी सत्व है उस सत्व को बाहर निकाला जाए, और मनुष्य की पीड़ा क्या है, उसकी वेदना क्या है, उसकी चिंता क्या है, उसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया गया। इसलिए आज गुजराती साहित्य एक विशिष्ट पड़ाव के ऊपर मनुष्यता जो है उसका केंद्र बिंदु है, ऐसा हम कह सकते हैं। हमारे बहुत अच्छे विवेचक चंद्रकांत टोपीवाला ने भी उनके एक पेपर में ये कहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंडिविजुअलिज्म शुरू होता है। वैसे गांधी में कहा गया था, हूँ मानवी मानव थाऊ तो गणो, वसुंधरा वसु थाऊ तो गणो, हूँ मानवी, मैं मानवी अगर मानव बन जाऊं तो बहुत ऐसा। वही समय उमाशंकर जोशी शुरुआत करते हैं, छिन्न भिन्न, मानवी विच्छिन्न हो गया है, आसपास के परिवेश से वो खिन्न हो गया है, ऐसे उमाशंकर कहते हैं। आज की कविता में भी मानवी की वो हताशा, निराशा, छिन्न भिन्नता वो देखने को मिलती है। उसको लावशंकर ठाकर आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं, मानस खवाई नहीं गयो पर खोवाई गयो छे। कहाँ खो गया है? तो एक भीड़ में खो गया है मनुष्य। वो भीड़ नगर जीवन की भीड़ हो सकती है, वो भीड़ अपनी अकेले में मेले की जो बात है वैसी भी भीड़ हो सकती है, लॉनलीनेस की भी वो भीड़, कितने भी लोग हैं लेकिन कोई है नहीं अपना, कैसे लोग हैं, इसकी भी भीड़ हो सकती है। ऐसे वो बात करते हैं। इसीलिए रमेश पारेख आगे कहते हैं, પોતાની કડકડતી એકલતા લઈને સૌ બેઠા છે ટોળાને તાપડે। तो अब सबकी अपनी अपनी लॉनलीनेस जो है, एमिली डिकन्स की जो बात है वो यहाँ पे हमें याद आती है। ऐसे ही हरेंद्र दवे उसी बात को आगे ले जाते हैं। कि हरेंद्र दवे मुंबई में रहते थे, वो भी कहते हैं कि फ्लड लाइट ની છોડ ઉછાળી जीवन में आगल पाछળ सरी जती मोटर। तो वो भी नगर जीवन की भीड़ में आदमी कहीं खोया हुआ, उसकी बात, उसको क्या पाना है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, उसकी बात करते हैं। वैसे ही देखिए, जब नगर जीवन की बात आती है
तो वैषम्य है प्रकृति और नगर जीवन। मानो एक दूसरे के विरोधाभासी है कि एक दूसरे के पूरक है, प्रकृति का शोषण या प्रकृति का दोहन, ये भी प्रश्न बार बार हमारे सामने आता रहता है। इसीलिए निरंजन भगत कहते हैं कि मुंबई नगरी में कोई आंगो मोरे तो एनी मंजरी ने राम राम कहजो नैना मीठा होगा लेजो। तो ये नगर जीवन में प्रकृति जो है वो कहाँ पे है, उसकी चिंता भी वो व्यक्त करते हैं। फिर जब आदमी नगर में जाता है गांव में से, तो गांव का तो एक मूल्य है, गांव के एक संस्कार है, और नगर की भीड़ में जाकर कैसा हो जाता है। इतने आनंदपरा लिखते हैं कि लक्ष्मी ની જેમ લાગણીઓ ગણે છે આ માણસ બરાબર નથી। तो आदमी की भौतिकवाद जो है उसकी असर कैसे होती जा रही है। आप देखिए हम सब भी भौतिकवाद में फंसे हुए हैं, तो ये भौतिकवाद उसकी पीड़ा और मनुष्यत्व का जो हनन होता है भौतिकवाद के कारण, वो गुजराती कविता में बहुत खुला है। जयंत पाठक कहते हैं हंसता हंसता रड़ी पड़े हुए मानस थे, रमता रमता लड़ी पड़े हुए मानस थी। तो ये भी उसकी ही बात है। साथ में गुजराती कविता के अंदर दूसरा ये देखने को मिलता है कि आधुनिकता का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छे से आया है। जैसे आप आज की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, वर्चुअल रियलिटी की बात करें, अब देखिए हमारे पास जो कवि बैठे हैं राकेश झा जी, वो उनकी कविता में लाते हैं कि ईमेल वांचीने हवे अर्जुन ने समझाओ मनमाथी काटमाळ काढे, गांडीव ने शंख ध्वनि साचवे भले पण परसमाथी पामता होता है। हाँ, तो ईमेल पढ़ के अर्जुन को समझाइए कि मन में से अपनी द्विधा को निकाल दे, गांडी और शंख ध्वनि को भी साथ में रखे, लेकिन पर्स में से पाम कब निकाले, अपने पर्स में से। तो ये एक नए शस्त्र, नए शास्त्र, उसकी बात भी वो गुजराती कविता में आती है। उसके साथ में देखिए डायस्पोरिक लिटरेचर का भी गुजराती कविता में बहुत प्रधान रहा है। उनकी भी अपनी अपनी वेदना है, वो अपनी धरा को छोड़कर दूसरे शहर में गए, दूसरे देश में गए, तो उसकी वेदना भी गुजराती कविता में बहुत अच्छे से बखूबी आती है, ऐसा आप कह सकते हैं। और कई सारे लेखक कवियों ने आज देखिए कंटेम्पररी गुजराती लैंग्वेज जो है जैसे बोली जाती है उसको भी साहित्य में लेकर आने का प्रयास किया। केवल शिष्ट भाषा को नहीं, जैसे समाज बोलता है वो प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया है। उसके कारण गुजलिश गजल भी आई। गुजराती साहित्य में सबसे ज्यादा लिखने वाला अगर प्रकार कहा जाए तो आज गजल है। कवि सुरेश दलाल तो कहते थे कि गुजराती साहित्य में इतनी गजल लिखी जाती है कि अगर हम दैनिक पत्र भी निकालें तो भी कुछ गजलें रह जाएगी, इतनी सारी गजलें लिखी जाती है। तो सबसे ज्यादा उसका क्रिएशन जो है वो कविता में गजल का है, उसके बाद गीत का। तो वो आदम टंकावी नाम के एक कवि है, वो गुजलिश गजल को लेके आते हैं। ऐसे ही सौम्य जोशी की भी एक दो ऐसी गुजलिश कविताएं हैं। ऐसे बहुत सारे कंटेम्पररी इश्यूज है, उसको भी गुजराती कविता एड्रेस करती है। मैं आपको बताऊं कि हमारे हरीश मीनाश्रू है, हाँ बिल्कुल, हरीश मीनाश्रू वो युद्ध की स्थिति, ये अभी उन्होंने बहुत अच्छा एक दीर्घ काव्य लिखा है। उसमें आज का ग्लोबलाइजेशन, उसमें युद्ध की स्थिति, कोविड, ये सब लेकर वो उसके अंदर आते हैं। अभी हमने सुना उदयन भाई की कविता, उदयन भाई की कविता में क्या आया, तो आज बच्चों में बहुत तनाव है, आत्महत्या कर रहे हैं, उनका आइडेंटिटी क्राइसिस में खोए हुए हैं, तो वो सब उनकी कविता में भी आता है। वो सांप्रत भी गुजराती कविता में दिखाती है। ऐसे गुजराती साहित्य की अगर हम परंपरा को देखें तो हमारे यहाँ जिसको ग्राम परिवेश की नवलकथा है, उपन्यास ग्राम परिवेश की कविताएं बहुत देखने को मिलती है। आध्यात्मिक प्रभाव वाली कविताएं नरसिंह मेहता से लेकर आज तक दलपत पढ़ियार तक उसकी परंपरा अभी जारी है। मैं उन सबको नहीं छू रहा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है इसीलिए, लेकिन अगर आज का जो कंटेम्पररी इश्यूज है उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर गुजरात में कई सारे नैसर्गिक आपदाएं भी आई, उसका प्रभाव भी लिटरेचर में है। जैसे हमारे यहाँ भूचाल आया तो भूचाल में छावनी नाम की एक उसका एक उपन्यास लेकर धीरेन्द्र मेहता आते हैं, उसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है, बहुत अच्छा। वो छावनी उपन्यास में उन्होंने भूकंप से बेघर होने वालों की व्यथा है वो धीरेन्द्र मेहता जी ने कच्छ में वो रहते हैं उन्होंने व्यक्त की है। सूरत में जब बाढ़ आती है तो रविंद्र पारेख मन प्रवेश जलदुर्ग ऐसे उपन्यास देकर
उस बाढ़ पीड़ितों की व्यथा को भी वो यहाँ पे दिखाते हैं। फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दंगे, भूचाल, इन सभी चीजों को संजोकर, एक साथ संजोकर रघुवीर चौधरी समझिया बिना छूटू पड़ो, ऐसा उनका एक उपन्यास है। उनमें वो सब चीजें लेकर आते हैं। देखिए, गुजरात आप जानते हैं कि पहले तो ऐसा कहा जाता था कि बहुत कम पानी वाला प्रदेश है, सौराष्ट्र में पानी की बहुत कमी है। ऐसे इश्यूज भी हमारे साहित्य में कवि लेकर आए हैं, उपन्यासकार लेकर आए हैं। राघव जी मादर की उनका एक उपन्यास है जलतीर्थ, उसमें यही समस्या को निरूपित करने का उन्होंने प्रयास किया है। ग्राम्य जीवन में किशोर सिंह सोलंकी की एक अरवल्ली ऐसे प्रकृति की कथा, वो भी हमें बहुत अच्छे से ग्राम्य जीवन में भी कैसे बदलाव आ रहे हैं और साथ में प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव कैसा है और वो अलग भी कैसे हो रहे हैं, दोनों चीजों को हमें वो दिखाती है। वैसे ही ध्रुव भट्ट एक बहुत अच्छा नाम है, उन्होंने भारतीय परंपराओं को, सामाजिक हमारी स्थिति को, श्रद्धा और अंधश्रद्धा दोनों को, उसके बीच में क्या अंतर है, उन सभी चीजों को लेकर तत्वमसी, समुद्रांति के ऐसे उपन्यास भी हमें दिए। ऐसे देखिए, साहित्य में आज अलग अलग टुकड़ों में अगर हम देखते हैं, ऐसे साहित्य तो साहित्य ही होता है, साहित्य ही साहित्य, लेकिन नारी चेतना की बात भी गुजराती साहित्य में बहुत बखूबी आई है। दलित चेतना की बात भी बहुत अच्छे से आई है। बहुत कम साहित्य में ऐसे देखने को मिलता है कि जो स्वयं दलित नहीं है फिर भी दलित की संवेदना को महसूस करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी कविताएं, प्रवीण गढ़वी और नीरव पटेल ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहिष्कृत फूलों ऐसे लिखकर दलितों की वेदना जो है उसके प्रति संवेदना व्यक्त की है। बस मैं पूरा ही करता हूँ। हमारे मधुराई जो है वो मुक्त सुख नवलकथा मतलब उपन्यास में ड्रग की समस्या लेकर आते हैं। आज देखिए समाज में देखने को मिलता है, वो अपने उपन्यास में बहुत अच्छे से बखूबी कैसे उसका चेंज चलता है, सब आपको देखने को मिलेगा। दूसरा उनका उपन्यास है सुरा सुरा सुरा, उसमें डीएनए की बात है, बहुत साइंटिफिक अभिगम द्वारा लिखे गए उपन्यास है, जिसमें बाइपोलर की बात आती है। आज हम स्पर्म बैंक की बात कर रहे हैं। उन्होंने 15 साल पहले स्पर्म बैंक से कैसे संतान पैदा होते हैं और कैसे उसमें सामाजिक जीवन में कैसे कैसे स्थिति का निर्माण होता है, इन सब चीजों से वो उन्होंने सो बहुत कम समय है तो इसलिए मैं यहाँ मेरी बात को समाप्त करता हूँ। अंत में इतना ही कहूँगा कि गुजराती कविता, गुजराती साहित्य लाइफ राइटिंग के तरफ आगे बढ़ रहा है। यूटोपिया का अंत हो रहा है और डायस्टोपिया शुरू हो रहा है। Thank you so much, NCG. I think we've given him a big round of applause. We should, because it's an extremely well-researched paper. It's just that we're always rushing against time, running against time, so we have to. But we will also like you to submit this to us so that we can publish it in our Literary magazine. And for the benefit of the jazz, what he said, he began by saying that Gandhi, initially, during the pre-independence era, his impact is there on the Gujarati literature. Please do not talk amongst yourselves, please. Please. It takes away, it just takes away, He spoke well. So because the chair ultimately has to make remarks, so yes, I don't think you understand that. Yes. I will not make any remark, you make it. But I must tell you, so what he said that initially Gandhi had such a huge impact on Gujarati literature, and it was a two-way traffic. Gujarati literature impacted him and he impacted Gujarati literature. So from the beginning, Gujarati literature is a very socially conscious literature. It moved towards that. And then he covered a range of topics, how man's role in the society. Ultimately, he says the literature in Gujarat addresses human condition. How do you make yourself, ultimately, how do you reach peace, how do you reach happiness? And therefore, a lot of contemporary issues, he took us to a whole trajectory, from the middle period to the contemporary issues. Now he spoke about, somebody writing about sperm bank almost a decade and a half back, he's saying that, a lot of them are ahead of their times as well. And so ultimately he says that from Gujarati literature, we're moving from utopia to dystopia. So it's a dystopian reality now that the literature is publishing. And it's a very, very rich literature as we can. And he has also quoted, the person sitting next to him,
your presentation. Thank you so much. And now we move on because you've got to give, they have to be equal. And like the class monitor, of course, we give equal time to everybody. So, Ravindra Singh Ji is our next speaker. Ravindra Singh Ji presently is working as an assistant professor, Department of English. So, you will be reading your paper in English. Manipur University of Culture in Imphal, and he's also served as a resource person, chief resource person of language documentation under the Central Institute of Indian Languages, Mysore. He presented and published research papers on Manipuri language and literature at the regional, national and international reputed journals, published books on literature and culture. As a senior fellow at the Omyo Kumar Das Institute of Social Change and Development, Guwahati, he prepared material on Indo-Myanmar border studies at the Mole border. Over to you, Ravindra Singh Ji. Warm good afternoon. I am sharing my gratitude to YD Thongji, respected chair, dear speakers, participants, friends, and those who were here. I am so much thankful to Sahitya Academy. And Sahitya Academy is doing a great and excellent service towards development of Indian languages. Today, in connection with this topic, discussion on contemporary literary trends, let me present you something about Manipuri literature. And before coming to the focus point, I will have the opportunity to share brief information of Manipuri literature, how it was written. As we always know that Manipuri is the only language among the Tibeto-Burman languages in India which has long and profound literature in its own script and cultural heritage which is more than 2000 years old. It is accepted that writing in Manipuri began by the middle of 7th century AD. This argument is supported by the copper-plate inscription of King Khokteksa, Report on Archaeological Studies in Manipur, Bulletin 1, 1931. And the bronze coin inscribed in Manipuri script of King Ura Wangbo's period 560 to 658 AD. Manipuri literature, based on its language and style, may broadly be classified into 5 categories. Number 1, prehistory literature. This is before the 8th century AD in the form of oral literature. Number 2, whole periods literature, 8th century to 1074 AD. Third one, the early medieval period literature from 1074 to 1709 AD. Fourth one, the late medieval period literature starting from 1709 to 1819 AD. Fifth one, the modern period literature starting from 1819 till trends of Manipuri literature. The modern period of Manipuri literature actually started from 1819 AD, and the literature of this period can be grouped into 4 subgroups based on the language, style used, and slightly variable themes. First one, prose and poetry, written without using any foreign vocabulary.
Number 2, literary pieces written using foreign, archaic and modern words. Number 3, poems written using a language mixed with Bangla and the brother stories. And number 4, prose the poetry written using a completely modern language. During this time, Manipuri literature flourished, and it was a time to sources of short stories, novels, dramas, and poems on various themes. Textbooks were produced, and other books, journals, and periodicals began to appear. Traditional drama also became more profound in the theme of history, mythology, social, and legendary stories. The prayer songs, which is already existed in Bengali, were translated into Manipuri. Pioneer writers of Manipuri literature were K. Sauva, this is a great poet, Dr. Kamal, by profession he is a doctor, but he was writing like very good romantic novels and poems. Idam Amal is a big poet, Navadifan, etc. Then there was the interim of Second World War. After the war, literary work revived with new ideas. Literature of many diverse fields like play, novel, poem, prose, history, translation, arts and crafts began to emerge. Literature goes on developing keeping pace with the changing society. The motto of city-fine society through literature in society. In turn, generates the need for literature. Then coming to the focus points, contemporary Manipuri literature. In a practical sense, the emerging of Manipuri poetry started from 1960s. Novels came up with new challenges in society. Feminist literature emerged in the 1970s. Notable writers of the time with Sisi Tomra, Minaketan, Sitaljit, Raghavan, Nilakant, etc. The literature of this time has varied themes like romanticism, modernism, contemporary topics in poetry and in prose. It deals with experience showing the relationship of men and women, positive social values, problems of women, economy, and differences between classes, degradation of tradition, morality, and rise of materialistic value, romanticism, etc. The language they use is purely modern in style. Some of the outstanding writers of the modern literature were Sauva, Idam Amal, etc. In the early decades of the 20th century, a band of Egyptian-patriotic writers heralded a renaissance in the arts and literature of Manipur. The period witnessed the part of pioneer writers like these poets and dramatists, novelists, etc. After 1960, a new trend came which is different from the earlier view of the pioneer poets as it inspired the society. Western view gradually enters into the minds of the younger poets, which results in social change. The earlier religious themes have been replaced by the reality of modern thought. In a nutshell, the only question to the people is that there is no meaning in life, no morality, gone are the beauties, the truth, and honesty in human beings, all have gone. This modern and Western colors such kind of poetry we found in some of the writings of Nilakanta, the famous poet, and here lies the image of these Eliot, Jivanandas, Rabindranath Tagore, etc. This Nilakanta's writing is based on narrative themes, and another poet came up, Davali, Kandu Padamakumar, etc. There are many poems of the younger generation that are not named here. All in all, the poetry of modern era is a mixed variety of Western color and Manipuri feelings. The
concept is modern and dynamic, value-based with new splits, new style, and new theme. The idea of commonness in the modern generation's poet is not trust, but frustration, not aggression, but the challenges they face. These writers paint the darkness in the world and focus on broken idols, but there is no end in sight for the fulfillment of their hope for a better future. They present a more artistic and a more scholarly note. Sometimes it's found that expression is more spiritual than artistic. However, it is true that the idea of repentance and support for the downtrodden are prominent. Their novel also came up in this time. It's a contemporary literature. The era of novel mainly focused on the reality of life. The novelists pen the story based on the present social life, and they look at the social themes more transparently. There are developments in all aspects: artistic expression, forming structure, and presentation. More focus is on the growing dissatisfaction with the value system and disagreement with present social system. And so story also came up. The changing political image, economic developments, living standard, modernization, and history of contemporary society evolved as a root of short story in Manipur. And this, here also we have light Asian criticism, that those poets and writers of this time, they also wrote many essays and criticism on Manipur literature, and something of this epic poem Khambat Webi, the longest poem in Manipur. So it has 34,000 lines. And still we are preserving this own epic in Manipur. The play also developed during this time. The Western proscenium theatre came to Manipur in the beginning of the 20th century. The first Bengali plays, Prabhas Milan, was staged at the Babasaran Mukhopadhyay Bandhok Prateshala. This was done by the Bengali Babus in Babuparat and Fort. Many Bengali plays were staged first 2 decades of the century. Then came up this original Manipuri plays also. Then autobiography writers also came up, and biography writers also came up, and travel of the resources, many travel writers also came up, and female poets and the lyricism. This was came up after 1990s. And in such a way, we are studying the contemporary Manipuri literature. And the flavor of this contemporary trends of Manipuri literature, in real sense, is essence of the early Manipuri literature, which has many qualities of ancient myths, folk tales. In the later stages, from time to time, the influence of existing lifestyles, changing social strata, and other undefinable reasons exalt it, especially with its peculiar model. No doubt, there are lots of influences of other literature like Sanskrit, Bangla, Hindi, and so on, in the trends of Manipuri literature. And this interestingly, the sudden change on the theme and style of Manipuri literature. Earlier, theme was focused on the beauties of nature, flowers, trees, birds, and later on, in this present trend, it's now changed to the words, dissatisfaction, angriness, and anything against the present social structure and the political scenario in the state. Thank you so much. This is wonderful. A couple of years back, and now of course the present dispensation has a very, very direct and clear Northeast policy, but I remember some years back, even Doordarshan and All India Radio, there used to be a huge fund which used to be sanctioned for radio serials and television serials to be made on the Northeast.
nice, and because it remains still, as an exotic place, as an unexplored place. But like you informed us, it is, from the folk tales to the contemporary issues, everything has been covered in the Manipuri literature. Thank you so much for this exhaustive paper presentation. Thank you. And we move on to the next speaker, who is Asaram Lumteji. He's a noted Marathi fiction writer. His eminence has spread across genres, short stories, novels, essays. Ira Pira Kalo, Alok, Dhulpet, and Tasnas are some of the works of Shri Lumte. Many of his stories have been translated into other languages and prescribed for curriculum in a number of universities. He has participated in many literary events at the national as well as the state level. As a reputed journalist, he is currently serving in Lok Satta. He is a recipient of the Sahitya Academy Award, the Maharashtra State Government Award, Maharashtra Sahitya Parishad G.L. Pokral Award, amongst many others. Over to you, Shri Asaram Lumteji. A round of applause for him, please. धन्यवाद. आज के इस परिचर्चा के अध्यक्ष वाईडी थोंगची सर, आप सभी कलाकारों, साहित्य अकादमी ने मुझे आपसे आपके साथ कुछ विचार रखने का अवसर दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ. और पूरे 10 मिनट में मैं मेरा इस समकालीन साहित्य की बात हम करते हैं तो समकालीन का मतलब क्या है? आज के समकालीन परिदृश्य में आज का जो पूरा माहौल है, तो वो अगर आपने देखा तो जहाँ आसपास का माहौल शोरगुल और कोलाहल से प्रभावित हो गया है. ऐसा लगता है कि हम निरंतर एक चहल पहल वाले बाजार में मानो खड़े हैं. सुबह घर से बाहर निकलते ही विज्ञापनों के बड़े बड़े फलक नजर आते हैं. छोटे छोटे गांवों में भी आजकल ऐसे विशाल फलक रोशनी में जगमगाते हुए नजर आते हैं. बस्ती में अंधेरा हो सकता है, लेकिन ऐसे फलकों की रोशनी का जोर कम नहीं. शाम को घर लौटने पर टीवी के माध्यम से अनगिनत उत्पादन हमें आवाज देते हैं. से लेकर तो वजन को बढ़ाए या घटाए, कौन से उत्पादनों का इस्तेमाल करें, इसे बताने वाले विज्ञापन हम रोज देख पढ़ रहे हैं. ऐसे समय में लगता है लिखने वाले का दायित्व बढ़ गया है. परेशान करने वाला, बेचैनी को बढ़ा देने वाला और आत्ममग्न स्निग्धता को पिघलाने वाला लेखन करना वर्तमान समय की जरूरत है. बाजार में स्वास्थ्यकारक जीने की उत्पादनों की चाहे जैसी भरमार हो, लेखक को लेकिन स्वास्थ्य हारक लेखन भी करना चाहिए, जिसके पढ़ने पर सवाल खड़े हो, नींद उड़ जाए, अनगढ़ी घरों का छत्ता फूट पड़े और पढ़ने वालों को विध्वंस करे. पुराने जमाने में पैरों में कांटा चुभने पर होने वाली पीड़ा को दूर करने के लिए उस जगह पर मोम लगाकर आग से दागा जाता था. लिखना इसी तरह दागने की बात. समकालीनता की चर्चा करने पर जब हम आज के यथार्थ की बात करते हैं, तो यह यथार्थ हमें अनगिनत सवालों से भरा हुआ लगता है. इस यथार्थ में हवा पर झूलने वाले खेत नहीं है, कल-कल बहने वाला पानी नहीं है, फूलों की नक्काशी वाली फसल में दौड़ाने वाली अल्लड़ चिंटू छोरियां नहीं होती. ऐसा गांव कहाँ होता है जहां कथित गांव की गोरियों को अपनी कविताओं और फिल्मों में दिखाया जाता है. एक समय ऐसा भी था जहां गांव का चित्रण रमणीय होता था. आज तो हम गांव के लोगों को जीते हुए बेहद ठोकरे खाते हुए देखते हैं. खास बात तो यह है कि सतह से नीचे के आदमी के पास अपनी जुबान नहीं है. जो दुबले हैं उनका जीना टूटने की कगार पर है. गांव की यादों में खुश होने वाला, स्मृति सुख पाने वाला लेखन एक समय ज्यादा हुआ करता था. आज जो शोषित और वंचित है, उसके जीने के प्रश्न दिन ब दिन डरावने होते जा रहे हैं. जीने के लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है. जीविका के लिए विस्थापित होने वाले मजदूर
जीने के लिए बेहाल हो चुका सुखाग्रस्त किसान, आज भी सामाजिक विषमता में जीने की जोखिम समझने वाला दलित, घोर मेहनत में फंसी औरतें, गांव के सारे लोग आज बेहाल है। इन लोगों की दबाई गई आशाएं, आकांक्षाएं, उनके बुझे हुए सपने, उनके रोजाना जिंदगी के तनाव किसी भी समकालीन और संवेदनशील लेखक को बेचैन कर देते हैं। ये सारे लोग ठोकरें खाते हैं, फिर भी मजबूती से टिके रहने की कोशिश जारी रखते हैं। जीने की ऐसी दशाओं में भी कसौटी पर खड़े उतरना और अपने सत्व को बचाकर हिम्मत से खड़े रहना किसी भी लेखक के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। समकालीन का अर्थ केवल वर्तमान का प्रतिबिंब इतना ही मर्यादित नहीं है। अपनी सभी अनिश्चितताओं, विसंगतियों और जटिलताओं के साथ आज का जीवन शब्दबद्ध करना होता है। जो लेखन समकालीन होता है वह प्रासंगिकता की मर्यादा तोड़कर आगे निकलता है। जो पारंपरिक मूल्य है उसमें से क्या स्वीकार्य है और कौन सी नई मूल्य व्यवस्था आदमी के आशा आकांक्षाओं को छू लेती है, इसका विचार भी समकालीनता के दायरे में आता है। समकालीन साहित्य पाठक को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। समकालीन साहित्य हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य का अविभाज्य हिस्सा है। आज के जटिल वर्तमान को समझाने में तो मदद करता है, बल्कि भविष्य के नई संभावनाओं की कल्पना करने के लिए हितकारी होता है। मैं जिस जीवन का लिखता हूँ वो अनादर है, बेहद है। अनादर जीने में जो ध्वंस हो रहा है, आज उसकी तरफ निर्विकार होकर देखना किसी का काम नहीं। ऐसा नहीं है कि इस विध्वंस के पीछे कोई अनाम ताकत काम कर रही है। ऐसे मान लेने पर तो शोषितों की जिंदगी को उनका भाग्य, उनका नसीब, उनकी नियति कहकर पल्लू झाड़ना होता है। दृश्य अदृश्य सतहों पर होने वाले शोषण को लक्ष्य करना, उनके स्तरों को बारीकी से निरखना जरूरी है। आज का समकालीन साहित्य जो कहानी, उपन्यास, कविता, कथेतर लेखन आदि विधाओं से आविष्कृत हो रहा है, उसमें इस दृष्टि से प्रेरित लेखन प्रभावित रूप से हो रहा है। आज का यथार्थ स्थितिशील नहीं, इतना ठंडा भी नहीं है कि हम उसे निर्विकार होकर देखें। यथार्थ का चेहरा निर्दय, भयानक और भक्ष को निगलने को खुल चुके कराल जबड़े की तरह है। भक्ष कौन है? वे सारे जो जबड़े में आने से पहले किसी दरिद्र ने जिन्हें अपने पंजे के नीचे लिया है और जिनकी आवाज भी नहीं निकलती। हालात ऐसी है कि सब तरफ गूंजने वाली आवाज में छोटे मोटे जीवों की चित्कार भी न सुनाई दे। आज का लेखक यथार्थ के जिस टुकड़े पर खड़ा है वह दिग्भ्रमित करने वाला है। ऊपर से वह बेहतरीन, लहराने वाला, मायावी और फेरिंग लगता है, तो भी उसके तल में जो कीचड़ है वह बेचैन कर देने वाला है। आज का गांव स्थितिशील नहीं, परिवर्तन में तेज गति ली है। जीने के लिए जो बेशुमार गति प्राप्त हुई है वह उतार पर बेहिसाब फिसलने वाली किसी पत्थर के शिला जैसी है। खास तौर पर देखा जाए तो भूमंडलीकरण के बाद के 2 दशक ऐसे ही बेशुमार गति के नागर और अनागर ऐसे 2 भिन्न जगत में कई लेखक अपनी कहानी और उपन्यास के माध्यम से सामर्थ्यशाली रूप से आविष्कृत कर रहे हैं। मैं जिस भाषा से आता हूँ उस भाषा में किरण गुरव, बालाजी सुतार, कृष्णाथ खुद, प्रवीण बांदेकर ऐसे लेखक आज के गतिशील ग्राम जीवन को अपनी अंतर्दृष्टि से सृजनात्मक प्रदान कर रहे हैं। ठीक इसी तरह महानगर जनजीवन का एक दुर्लक्षित हिस्सा जयंत पवार जैसे समर्थ कहानीकार ने मुखर किया, जिनकी कहानी में एक अद्भुत ऐसा जादुई यथार्थवाद दिखता है। आज के समकालीन साहित्य में जो प्रवृत्तियां या विशेष हमें दिखाई देते हैं उनमें बहुविधता है। यह बहुविधता जैसे आशय में दिखाई देती है वैसी ही अभिव्यक्ति की शैली में भी दिखाई देती है। मराठी साहित्य में 1960 के बाद विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से जो लेखक कवि आए, उन्होंने अपनी दृष्टि से यथार्थ को शब्दरूप दिया। दलित साहित्य की धारा ने विद्रोह के क्रांति विज्ञान को नई भाषा दी, नई चेतना दी। ग्रामीण जीवन का साहित्य, आदिवासी साहित्य, स्त्रीवादी साहित्य, ऐसे कई प्रवाह साहित्य की इस धारा में सम्मिलित हुए। जब विभिन्न प्रकृतियों का साहित्य निर्माण होता है तो स्वाभाविक रूप से वह साहित्य समृद्ध होता है। हाशिए पर जो समूह थे उन समूह की सशक्त अभिव्यक्ति जब साहित्य के रूप में आ गई तो इस अभिव्यक्ति ने साहित्य की मुख्य धारा में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। विख्यात मराठी कवि नामदेव रसाळ इस बात की सबसे बड़ी मिसाल। आज के समकालीन साहित्य पर यदि हम एकाग्रता से देखते हैं तो कुछ बातें अधोरेखित करना जरूरी है। यह जरूर है कि आज के यथार्थ को हूबहू कार्बन कॉपी की तरह प्रस्तुत करने से साहित्य नहीं होता। यथार्थ को
कलात्मक रूप देने में अनगनित बिंब, प्रतीक, लोककथाओं से झरते आए संदर्भ वगैरह आते रहते हैं। अनुभव का कला वस्तु में बदल जाने का सफर इसी तरह कई बातों को स्वीकार करते हुए ही होता है। जब लोग कहानियां कहते थे तब भी कल्पना शक्ति की बेहद ताकत थी। उसी के आधार से यथार्थ को कथन मूल्य प्राप्त होता था। यही एक बात ऐसी थी कि जिसमें जीने के अभावों को मिटाया जा सकता था और व्यक्ति अपने होने की कमजोरी पर मात कर कल्पना से कुछ समय के लिए क्यों न हो मनोरंजन खड़ा करता था। आज हम जादुई यथार्थवाद की बात भले ही करते हो, अपनी कथन परंपरा के भाषिक संचित देखने पर पता चलता है कि यथार्थ को सीधे सपाट ढंग से कहने की रीत अपने यहाँ कभी नहीं थी। दिलचस्प कहानियां कहने वाले लोग पुराने जमाने में थे। ऐसे भी लोग देखे सुने हैं जिनकी कहानियां एक रात में पूरी नहीं होती और लगातार कुछ रातों तक चलती थी। चमत्कारपूर्ण, अद्भुत नवलता से मौजूदा दुख भरी परेशान करने वाली जिंदगी के खालीपन को मिटाने वाली कहानियों की बड़ी लंबी परंपरा अपने यहाँ है। इस जिंदगी की सारी राहें, हसरतें और हुंकार लिपिबद्ध नहीं हुए हैं। हजारों जवानों के रास्ते वे आज भी जाहिर हो रहे हैं। ऐसी जिंदगियों की अनाम कहानियों को रेत पर खींची रेखाओं की तरह नष्ट नहीं होने देना है। जब तक इन लोगों की जीने की कश्मकश जारी है तब तक कहानी जिंदा रहने वाली है। वह समय के बावजूद बची रहेगी इसलिए कि वह स्थल काल को बांधने की कला है। ना सुंदर कहानी तो आप सुन पा रहे हैं, लेकिन अगर आप इनका लेखन देखें ना, देखिए ऐसा लगता है जैसे छपा हुआ है। इतने स्पष्ट विचार है ना, ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। स्पीक में के जो है ना डॉक्टर किरण सेठ जी, वो भी ये कहते हैं अरे ये ग्रेटनेस किसी व्यक्ति की पता करें ना। आप ये कॉमन में लिखा है कि उपन्यास लिखा है पाठ्यक्रम नहीं कर पाया। Will you like to can you share about this in English? Would you like to say what you said? In English तो थोड़ा सा हिंदी नहीं बता सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो ये मुझे extremely yes. So he's absolutely he just focused on contemporary literary trends in the Marathi tradition and against आपकी language बहुत अच्छी है, भाषा भी बहुत अच्छी है। Yes, absolutely. अच्छा एक बार हम हिंदी भी मैंने किया। अच्छा अनुवाद भी आपने किया। बहुत सीधा। मृदुल हनुमान जी आए हैं क्या? मृदुल जी नहीं पहुंचे ना? Fine. So we will have the last presentation now by Shri Kalakar Mutwaji, who is from Sindhi. Kalakar Mutwaji knows Kachhi, Hindi, Sindhi, Urdu, Gujarati, and English. He is a poet and a fiction writer and a folklorist. Kalakar ji has 9 books to his credit. Besides, his 6 translated books have also been published. He has participated in various seminars and literary meets. He is a recipient of several awards and honors, including the Gujarat Sahitya Academy Translation Award, the first prize from Gujarat Urdu Sahitya Academy, and the second prize from Gujarat Sindhi Academy, and many others. Kalakar Mutwaji, please present your paper. And let's have अध्यक्ष जी और आप सब सज्जन, मैं हमारे हिंदुस्तान की एक समृद्धतम भाषा सिंधी के बारे में बोलना चाहूँगा। जैसा कि सिंधी का बैकग्राउंड, क्योंकि आप सब यहाँ जो बैठे हैं उन सबको सभी भाषाओं का अपना अपना प्रांत है, लेकिन अखंड भारत जब विभाजन हुआ तो सभी भाषाओं के लोगों को अपना अपना प्रांत मिला, लेकिन हमारी सिंधी भाषा थी उसको कोई इस तरह का प्रांत नहीं मिल सका, जिसकी पीड़ा आज भी है। विभाजन के बाद सिंधी भारत के विविध कोनों में बिखर गए। पहले तो रोजी रोटी, घर, सभी समस्याएं थी। जैसे ही कुछ रहने लायक मतलब सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई स्थायी हुए, तो उसके बाद सिंधी साहित्य के लिए, सिंधी शिक्षा के लिए हमारे सिंधी भाइयों ने सिंधी कम्युनिटी की कोशिश की। और आपको जानकर के लिए बहुत ही खुशी होगी कि सिंधियों ने अपने आप को बहुत जल्द ही एस्टेब्लिश कर दिया।
शिक्षा की दृष्टि से और अपने रोजी रोजगार की दृष्टि से भी बहुत ही जल्दी एडमिशन किया। उसके बाद स्कूल खुलने लगे, लेकिन प्रांत न होने की वजह से सिंधी में शिक्षा का कोई मतलब रहा नहीं, इसलिए धीरे धीरे सिंधी जबान एक तो स्केटर तक पूरे भारत में इतना बड़ा पॉकेट था नहीं कि इस तरह का कोई सिंधी भाषा बन पाए। अलग अलग, जैसे कोई राजस्थान में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, कोई दक्षिण में रहता है, कोई नहीं रहता है। तो इस तरह से विभाजित होने के कारण जो यूनिटी या एकता या एक सामाजिक माहौल बन पाए, ऐसा बन नहीं पाया। उसके बावजूद भी सिंधियों ने अपनी भाषा को, अपने साहित्य को, अपनी कविता को बड़े अच्छे तरीके से निभाया है और बड़े अच्छे तरीके से आज भी लिखी जाती है और पूर्व में भी लिखी जाती थी। अगर हम शाह लतीफ से शुरू करें तो सिंधी के 3 पायनियर शाह, सज्जन और सामी, जिस पर शाह साहब का असर तो सिंधी साहित्य पर बहुत बड़ा असर है। जब हम समकालीन ट्रेंड्स की बात करते हैं तो अगर हम देखें, आज हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो शाह लतीफ ने 300 साढ़े 300 साल पहले स्त्री को बहुत ही सशक्त बताया है। सिंधी की जो 7 लोक कथाएं हैं, उनकी जो उन्होंने अपने आप को जो व्यक्त किया है एक स्त्री के रूप में किया है, यानी उनके जो पात्र हैं वो स्त्री पात्र है। जैसे शशि कुंडू है, उमर मारी है, लीला चलेसर है, ये 7 लोक कथाएं हैं। तो उन्होंने अपनी बात जो कही है वो 7 लोक कथाओं के पात्र से कही है, और उन्हीं 7 लोक कथाओं की जो स्त्री किरदार है, जो पात्र हैं, वो बहुत ही मजबूत है। जैसे आप मारवी को लेंगे तो मारवी वतन परस्ती की बहुत बड़ी मिसाल है। शाह साईं बोलते के वाजाए वतन के जो यास गोर महीने सुमरा कज पौंगा पास दादा ने दी हती वरियमा निजाए वास मैया इतिहास में मर बने मली रहे, यानी कहती है कि अगर मैं यहाँ मर जाऊं तो मेरी जो लाश है, मेरी जो मिट्टी है, वो मेरे वतन को पहुंचा देना। और कोई धूप के लिए कोई अगरबत्ती या ऐसा नहीं है, हमारे आसपास की जो वृक्ष है, जो बेलें हैं, उनकी जो खुशबूदार फूल हैं, उनसे मेरे जिस्म को विकसित करना। इस तरह का अगर तुम करोगे तो मैं ऐसे समझूं कि जैसे मैं बड़े में मर भी गई हूँ लेकिन जी गई हूँ। इस तरह के बहुत सारे किरदार हैं। जो ससुई का जो किरदार है, ससुई को भी उन्होंने बहुत ही बोल्ड बताया है, क्योंकि ससुई दोनों के पीछे जो पहाड़ों की जो कष्ट करती है, जानवरों के साथ जो मुकाबला करती है, और जो पहाड़ों के साथ जो बतियाती है, बातें करती है, वृक्षों से जो बातें करती है, उसमें शाह साईं ने ससुई को बहुत ही बोल्ड बताया। तो वो शाह साईं का असर आज भी हमारी कविता में देखा जा सकता है। आज भी हम अगर पैर लिखते हैं, हमारे कवि पैर लिखते हैं, तो उनका फ्लेवर या उनकी सुगंध आज भी हमारे साहित्य में देखी जा सकती है। बाकी देखा जाए तो दुनिया के अंदर जो ट्रेंड्स चले, वो सभी ट्रेंड्स भारतीय साहित्य के, या जो ट्रेंड्स यूरोप से आए, या जो ट्रेंड्स खास करके हमारे सिंधी साहित्य में जो ट्रेंड्स आए वो हिंदी साहित्य से आए हैं। क्योंकि हम अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो हिंदी एक कॉमन भाषा है, तो उससे हमारे पूरे साहित्य में जो ट्रेंड्स आए, उसी तरह से नई कविता, अस्थिवाद, प्रगतिवाद, पसंदी, सब शुरू के दौर में जो था, तरक्की पसंद का भी दौर था, जो शुरू कबीर और अस्थिवाद का जो काला कोट, वो भी हमारे साहित्य में देखा जा सकता है, और हमारी कहानी में, हमारी नॉवेल्स में, सब में देखा जा सकता है। फिर जैसे कि मैंने कहा कि विभाजन की जो पीड़ा है, तो उस पर बहुत सारा लिखा गया, उसमें कविताएं भी लिखी गई है, नॉवेल्स भी लिखे गए हैं, और कहानियां भी लिखी गई है। खास करके सिंध में जो हिंदू मुस्लिम का कोई भेद था नहीं, जब विभाजन हुआ तो सिंधियों ने सोचा कि कुछ दिन के लिए हम जा रहे हैं भारत, उसके बाद वापस अपने घरों में जाएंगे, तो अपने जो घरों की चाबियाँ हैं, अपने जो दोस्त हैं, जो वहाँ रह गए मुस्लिम दोस्त या इस तरह के, तो सबको वो देख करके वापस आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो उसका जो दर्द है वो भी कहानियों में आया, और वहाँ जो जब वो निकल रहे थे तो किस तरह की एक दूसरे से पीड़ा या कितना एक दूसरे से लगाव था, वो सब इन कहानियों में बहुत सारी कहानी, इस तरह की जो कहानियाँ हैं उनमें ये आया है। जैसे अतो अब्दुल रहमान,
फिर ठाकुर चावला जैसे बाद में अब गए सिंध, तो उन्होंने तो बिल्कुल एक सच्ची कहानी लिखी, यानी तुम सिंध में रही पाओ, यानी आप सिंध में रह जाओ। तो उनकी जो जवानी की जो रियल स्टोरी, उनकी जो कहानी सारी, तो इस तरह की कहानियाँ भी हमारे सिंधी साहित्य में बहुत ही मुखर होकर के आई। और क्योंकि भारत में आए सिंधी सब शहरों से आए और आकर के शहरों में बस गए, तो आंचलिकता की जो एक आंचलिक साहित्य होता है वो बहुत ही कम लिखा गया। या उस दौर के जो लोग आए उन्होंने साहित्य लिखा आंचलिकता के बारे में, लेकिन उसके बाद के जो साल हैं आज तक वो आंचलिकता से थोड़ी सी अलग है। मैं चूँकि गाँव में रहता हूँ, मैं कच्छ में रहता हूँ, और कच्छ और सिंध राजस्थान की एक पूरी पट्टी है जो अलॉन्ग द सिंध है। तो मेरे जो कहानी संग्रह है वो कॉन्शियसली मैं उसको ग्राम्य साहित्य के पोर्ट्रेट या चित्रित करने की कोशिश करता हूँ। रिसेंटली मेरा वकील करके एक कहानी संग्रह है जिसका प्रोफेसर नामदेव ताराचंदा ने लिखा है, और उन्होंने मेरी कहानी को फानेश्वर जी के साथ और प्रेमचंद जी की कहानी की खुशबू वाला बताया है। ये मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। बाकी नई कविता भी हरीश वासवानी जी और बहुत सारे सतीश सिरोड़ा जी, हरीश करमचंदानी जी, कैलाश शाह जी, बहुत बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स ने उन्होंने नई कहानी भी लिखी है और नई कहानी भी लिखी और नई कविता भी लिखी। जो नई कहानियाँ है जिसमें आप एब्स्ट्रैक्ट तरह की जो कहानियाँ थी वो भी हमारे सिंधी साहित्य में हैं, और नई कविता भी है। मैं चाहूँगा कि हरीश वासवानी जी की एक नई कविता का एक टुकड़ा आपको सुनाऊं। किनकी जिंदगी का बेहतर मौत बख्शोगी तो, यानी किनको जिंदगी से बेहतर मौत बख्शी जाएगी। मौत का बदतर ए किनके मौत का बदतर जिंदगी बख्शी गई, और किन्हीं को मौत से भी बदतर जिंदगी दी जाएगी। सिर्फ के चाबुक है पहरा रहता जे कैद खाना आबाद सीजन, यानी सिर्फ कुछ चाबुक और पहरे रहेंगे ताकि ये कैद खाने आबाद हो सके। ये हरीश वासवानी जी की है। उनकी एक और है, सड़कन के मुखे चार दीवारी जी विच में, सड़कन के मुखे चार दीवारी जी विच में, यानी सड़कों के बीच मुझे चार दीवारी के अंदर को कमीनों समझो तो चला है, यानी कोई कमीना समझौता हुआ है। भला हंदन जी भजन जी ताक ने सड़कन के मुखे रोजी दे दी, यानी जो मुझे जो रोजगार मिलता है वो एक चार दीवारी के मिलता है, उससे मेरा समझौता हुआ है। चार दीवारी में मुझे तन मनसा व्यभिचार करे, यानी कि चार दीवारी के बीच मेरे तन और मन के साथ व्यभिचार करके ये शहर मुझे धीरे धीरे पुरुष वेश्या जो रूप दीदो तो, यानी ये शहर मुझे धीरे धीरे पुरुष वेश्या का रूप देता जा रहा है। इस तरह की जो पीड़ा, इस तरह के जो नई कविता का जो फ्लेवर हमारे सिंधी का देता है। कहने का मतलब कि हमारा सिंधी साहित्य अब जो नई जनरेशन आई है वहाँ थोड़ा सिंधी साहित्य कमजोर होता मुझे दिख रहा है। हमारे यहाँ विद्वान बैठे हैं, इस बात से सहमत होंगे, लेकिन हमारा जो पुराना साहित्य है या आज से 20-25 साल का जो पहले का जो साहित्य है वो बहुत ही समृद्ध था और किसी भी भारतीय भाषा का मुकाबला करने की कोशिश करता था। वो कमजोर वो उसकी वजह हम सब जानते हैं कि अलग अलग कोई अपना काम नहीं। भारत सरकार की है जैसे राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद और हिंदुस्तान में साहित्य अकादमियाँ चलती हैं, वो अपने हिसाब से सिंधी का काम हो रहा है, लेकिन ये भी सत्य स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारा भारतीय जैसे हमारी भाषा अलग अलग शहरों में रहती है, भाषा कमजोर होती जा रही है, इस तरह साहित्य पर भी उसका नेगेटिव असर पड़ रहा है। आपने मुझे ध्यान से सुना, कलाधर जी, सिंधी के ही कवि हैं जिन्होंने कहा है
कि हम आए तो शरणार्थी के रूप में थे, फिर हम पुरुषार्थी बन गए, है ना? So it is very a Sindhi poet has said that we came as refugees, but Purusharth certainly is hard work. Because of the sheer dint of the hard work, Sindhis are spread across India. They are in Maharashtra, Bombay is full of Sindhis, and we know how much industrious they are. You have the whole Hiranandani estate and all. And so for the benefit of the chairman, may I tell you, just like we were talking about the Gujarati Sahitya and how Gandhiji's influence was there, Sindhi Sahitya, because it was a pre-partition area, you know, the province of Multan, all of that was a part of India. But after partition, when the Sindhis had to come to India, so their literature reflects that pain and that pathos of completely being torn. Now imagine having a province with the name Sindh and coming to India and not being given any land. But the good thing, the solace is that in the Rashtragan, in the national anthem, we have, you know, Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha. So Sindh has been given, has been acknowledged. Every Indian sings about the glory of Sindh, and Sindhis are absolutely, it's a common, it's a race which is known for the sheer dint of hard work. You know, so there is a very famous folktale which he mentioned, which is called Sassi Punnu. Now Sassi is a girl who falls in love with Punnu, who is a prince, you know, and somehow, you know, they marry, he stays in incognito with her, and then Punnu's brothers kidnap him back because how can you marry a commoner? You are a prince. So then the entire folktale traces the story of how Sassi, a girl, you know, a timid girl, is, you know, the whole desert and went in this Bhambor. Gujarat में Bhambor जगह पे ससी पुन्नू की कहानी है और ससी की the way Sassi goes in search of her husband, you know, how she meets the vagaries of nature, how she fights wild animals, how she, of course, ultimately, you know, what can, you know, against God's will and against nature's vagaries, nobody can stand. But the entire story, if you go to that belt, there are caravans who still sing the songs of glory of Sassi and Punnu, and then he comes to the contemporary friends and bemoans that the regional isms, you know, because there is a, after all, I think we are all third generation people, fourth generation people after the partition. So what he's saying is that now in the literature, in the Sindhi literature, we do not find that kind of, you know, that love, because ultimately urbanization has just, sometimes urbanization has just equalized everything, you know. So there is no, like, you know, for example, Sindhis have a very unique style of eating. They have something called a Sindhi curry, you know. Their cuisine is very, very famous. So these little things, you know, which have now kind of subsided in the current generation, that of course is there. But Sindh lives on, as I said, you know, in the anthem and in our hearts. And that's about it. And I would like to request the chair to make the final concluding remarks before we break out for lunch. मोटवा जी का बात सुन के मुझे भी एक याद आ रहा है। मैंने सिंधी लिटरेचर के बारे में किसी से कुछ सुना था, क्योंकि जब शिमला में इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, उस समय में भी मेरा जो मैंने तैयार किया और मेरा यही टॉपिक था, राइटिंग ट्रेन के ऊपर। और आते समय मुझे एक सिंधी बुजुर्ग आदमी from Simla to Chandigarh. लेकिन आपने वो बुजुर्ग कैसे कहा? You said old. मैं भी बुजुर्ग हूँ, विचार हो सकता है। I think I am elder to him. I am a pre-partition generation. I am running 87. Oh, wonderful! But you don't look 87. That's great. That's great. He's 87, I am 70. Oh, lovely. ये बताया था आज, उनका बात सुन के फिर मुझे ये वो याद ताजा हो गया। तो हम लोगों ने सभी से सुना और जो बोलना था, कमेंट देना था, रूबी जी ने दिया। मेरा खाली एक बात है, जो भी साहित्य के लिए आपको वो देते हैं, ये क्या बोलते हैं, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने देते हैं और बुलाते रहते हैं हर एक बार, तो मेरा सब्जेक्ट यही बार बार यही होता है।
और दूसरा बात, हमारा जो बायोडाटा है 2005 में जो बायोडाटा दिया था साहित्य अकादमी अवार्ड मिलते समय, वही बायोडाटा अभी उधर में तो वही गया था। सर देखिए, आप मैं अकादमी की तरफ से एक बात कहना चाहूँगी, आपके फोटोग्राफ्स भी 20 साल पुरानी है, उसके लिए आप कुछ नहीं कह रहे। इनमें जो फोटोग्राफ्स बदल गया, मेरा पहला पेज में। You are right, sir. जनक पत्री की तरह वो चीज it's a horoscope, no, but I convey this to No, the I stopped sending my new biodata because every time I used to send and they will again repeat same thing like 2005. No, that's because we तब से मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ, फिल्टर भी हो गया हूँ, आपकी बातें करने हमारा किताब का नंबर भी बढ़ गया है, पेपर का नंबर भी बढ़ गया है, including पद्मश्री अवार्ड। तो मगर कहीं भी रिकॉर्डेड नहीं, बस वही 2005 में जो रिकॉर्ड किया है, वही मैं अगर नया भेजूंगी तो फिर वही रिकॉर्ड होगा। नहीं सर, अब ये शिकायत आपको नहीं रहेगी, आई प्रॉमिस। आपकी सारी उपाधियां, उपलब्धियां, आपके चश्मे का नंबर भी बड़ा, किताबों का नंबर भी बड़ा, सब कुछ ऑलमोस्ट सब रिकॉर्ड होगा। एंड इसी नहीं रिकॉर्ड नहीं सर, आप नहीं जरूर होगा, मैं कन्वे करूंगी। आई एम नॉट गोइंग फर्दर सर, प्लीज बिलीव मी। एंड हमें लगता है कि अब जो है भजन के बाद भोजन की व्यवस्था है नीचे, तो हम लोग चले आते हैं सर। We should conclude it. I thank all the participants for such a beautiful deliberation. We have learned a lot of things from you, and I think that might have benefited our listeners also. Thank you very much for such a lovely deliberations. Thank you so much. Thank you. Namaskar from Sahitya Academy. And we will reassemble at 2:30. There is lunchtime. Renuji, you please wait the participants. Renuji has to give you something. You have to sign all the delegates. Please stay here. Rest can move. Renuji coming. Devesh, we have to have a group photograph, please. Yes, this is the last. हालत ये ना दिल के आगे निकल One from the mobile also Devesh and other. लेवल वाले बैनर चेंज करके We still have to. We cannot move. young man
No, some people like it, some people not. बाकी सब बैठ जाएंगे तब मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, जैसे अनाउंसमेंट We've been doing it for years actually. Technically, are we ready? Yes. Are we ready technically? ऑफ माइक कह रहे हैं, ऑन माइक भी बोलेंगे। फोन्स आपको साइलेंट मोड पे स्विच ऑफ करने पड़ेंगे। Namaskar, Science Academy welcomes you to Sahitya Utsav, its annual festival of letters, and this year is extremely special for us as we complete 70 years of our existence, 70 years of reading, writing, translating, meeting the best minds in India. It is indeed an honor and a privilege to have you all with us. And in this session today, we have the multilingual short story reading session. I welcome you all on behalf of the Sahitya Academy. I am Rumi Malik, and not taking any more time of yours because we really want our participants to read at ease. Short story reading takes time. It takes a lot of drama and an enunciation. तो आपको time देना होगा. Let me first begin by introducing our esteemed chair, Shri Manoj Kumar Goswami ji, who I could not recognize because he does not look old enough to be in the chair. You know, I was saying he's such a young person. So Manoj Kumar Goswami ji is an eminent Assamese writer. He earned his master's degree in physics from Guwahati University. Besides Assamese, he knows Hindi, English and Bengali. Currently, he is the chief editor of Amar and NKTV. He has several publications to his credit, which include the Samiran Barua, Ahi Ase, Jibon.com, Alumni Umor Anguli, Swadhinata,
Nirbachito Golpa and Virus Arun Ananya Golpa. He is the recipient of the prestigious Katha Award, Sanskriti Award and the Sahitya Academy Award. We welcome you, sir, and congratulations upon winning the Sahitya Academy Award, which I believe is really coveted by everybody, you know. We had Namita Gokhaleji coming up sometime back here, and she was like, I do not care about any other award, but I am so happy that the historic trophy, the Sahitya Academy trophy, as you will be knowing, has been designed by Satyajit Renji, you know, the trophy which we have. And today when you will get your mementos, you will get a Sahitya Academy badge. The trophy is that historic. So extremely proud and happy to have you here. We will straight away begin. I will also request our volunteers to please maintain silence. Also, all the participants and the audience to please either put their phones in silent mode or switch them off. We can also close the door so that no outside disturbance may come on. Yeah. We have Achana Bansalji, who is a very known name in the literary circles. She writes in English. She is an acclaimed fiction writer in English. Her stories have been published in leading dailies and journals. Her short story, Checkmate, won a Book for Borges Award 2007. A collection by the same name comprising some of her out-of-the-box stories was published in the UK by Scribner Press. Behral Dhanyawad, a collection of her translated stories in Hindi, was published by Rajkamal Prakashan in 2017. Her stories have also been translated in Malayalam, Telugu and Urdu. Her novel, Train in Bulandshahr, was released recently and met with much acclaim and is a bestseller already. I request all my volunteers to maintain complete silence once the story is being read, and once this door is shut, we will begin. Ma'am, you ready? Over to you, ma'am. Good afternoon. I am honored to be a part of this session on multilingual mediums, and I thank Sahitya Academy for inviting me. I will be reading my short story, Thanks Anyway, from my collection of stories, Vanilla Ice Cream and Chocolate Sauce. Thanks Anyway. Thanks Anyway is etched in my memory forever. My first visit to the crematorium, his condition, nothing to cry about, considering he was a ripe 79. But when I thought of his bubbling heart, his joie river, his burning desire to meet his son and grandchildren, I was filled with not pity, but sorrow. How can one feel sorrow for a total stranger? That's what he was, till that brief encounter in a restaurant. My husband asked again and again. I could not explain to him why I no longer celebrated my 29th birthday. How cheerful I had been in the morning. I had baked 2 cakes, one for the family and one small one for a coffee session. It was a daily ritual. 5 days a week, I drove up to his sprawling bungalow to share a cup of coffee with him. The maid kept it ready before the party, and since he liked it piping hot, I dared not be late. I intended surprising him with the cake, for I had kept my birthday a secret from him. Instead, it was I who was in for a shock. He had been found dead in his favorite rocking chair by the maid. A small crowd had collected by the time they reached. Nobody knew what to do. In fact, they were all waiting for me to arrive. I was in a quandary. Should I inform his son in the US? But he had made me promise that in case he died, I would cremate him without waiting for his son to arrive. I want to be cremated the same day, and my son can never make it. And remember, no relatives he had born.
I'm 78, yet persistent. And at that age, one never knows. Not that one can be sure at any age. Death snatched away my younger son at the tender age of 5. The next moment, I was laughing at the named son, 3-year-old son chasing a squirrel, while I sat brooding over his dead son. What if he had lived? The ne- The neighbors watched curiously as I went about making the necessary arrangements. Many eyebrows were raised, but I didn't care. He had never cared, not when he ate alone in a jazzy joint, frequented mostly by the younger generation. His feet tapping to the beat of the way you make me feel. He did not care if people snivered at his nagging clothes or wondered at his voracious appetite. I smiled as I recalled our first meeting. He was dressed in spotless white, even the shoes were sparkling white, and the handkerchief, how it got deposited in my purse, remains a mystery to this day. It was after a shopping spree that I decided to treat myself to a much-deserved lunch. Depositing my various packages on a chair, I opened my purse to take out my handkerchief, was wiping away my perspiration when a stern voice said accusingly, "That's my handkerchief you're using, young lady." Astounded, I looked up and then at the handkerchief. Good God, it was a gent's kerchief, but I stuttered. And this happens to be my table. I left my handkerchief here. I of course did think of kleptomaniacs in this world. Blushing furiously, I began collecting my packages. "You can share my table if you want to," he went on magnanimously, settling down with a soup. "You don't mind sharing your table with a thief," I said coldly. "Come on, I never called you a thief." "A kleptomaniac is not a thief," he said, smiling foolishly. "Well, for your information, I'm neither," I said haughtily. "Can I have my handkerchief back?" He laughed. To my horror, I realized I was still clutching it in my hand, and mortified, I handed it to him. He chuckled. How do I remove this lipstick mark? No, not that it matters, now that my dear wife is dead. But I snatched it from him. "I'll have it washed and sent to you," I declared loftily. "I'll give it to you. Why don't you keep it as a souvenir?" He guffawed. "Certainly not. If you will be kind enough to give me your address, it will be delivered to you," I said irritably. This whole business of a measly handkerchief was beginning to get on my nerves. Never had I been so embarrassed in my life. Kleptomaniac, indeed. What would my children say if I shuddered? Despite his pleas to share his table, I walked out on a hungry stomach, his address scribbled on my palm. A sprawling, dilapidated bungalow with a faded nameplate was his abode. I looked around fruitlessly. There was nobody to be seen. After ringing the bell in vain, I was about to depart when I sighted him, sprawled on a rocking chair, dozing under a neem tree. As I stood about, wondering how to wake him up, he stirred, adjusted his spectacles and coughed. "So you managed to hunt me out. Persevering, aren't you?" "Here's your handkerchief," I said stiffly. His eyes twinkled as he burst out laughing. "Why are you so annoyed about that whole thing? It happens, you know. It's the funny side of life. If it weren't for this relieving mood,
life would be such a bore, would it? He smiled disarmingly at me. Suddenly, a weight lifted off my chest. It was funny. I began to laugh, and he suddenly joined in. Time fled as we sat chatting. I promised to come again, and so began our 11 o'clock friendship, as we called it. Many a time I prepared a snack and carried it over to have a coffee. He showed me around his garden with maternal, or should I say paternal pride. What would happen to his plants if he should die was his sole worry. Not that he thought about dying often. It was only when he was in a reflective mood that he talked about it. You know, it's been 5 years since I saw Nikhil, my son. In the beginning, he came every year, but now he's too busy, I suppose. He kept silent, and an expression of pain flitted across his face. Suddenly, he looked old, more than his 78 years, and never broached the topic again. He too avoided talking about Nikhil till his letter arrived. Then he could contain himself no longer. He talked and talked of his Nikki, his childhood, his grandchildren. Don't they look like Nikki? He said excitedly, showing me their photographs. I smiled at him badly. I didn't have the heart to tell him they had gone after their mother. Sometimes, instead of a scheduled 1 hour, we sat talking longer, and on reaching home, I worked in a frenzy, trying to make up for the lost time. My husband, who came home for lunch, then had to make do with a meal of sauce. He naturally felt annoyed. Even my friends wondered at my sudden and total withdrawal from the mid-morning coffee cum gossip sessions. I found them so puerile compared to my worldly wives, nimble-witted, septuagenarian friends. You can't go into mourning just because that old man walked off, my husband objected. How could I explain to him that he was more than a mere old man, a friend, a mentor, a father, or a brother, someone not easy to find or replace? Our year-long friendship had taught me a lot, changed my very concept of life. How could I discard those precious 12 months? The man had gone, but his words remained. Words nobody had the time to listen to, not even his own son. I got a call from him after a week. He had been on vacation with his family and received a telegram only on his return. When are you coming? I asked. He seemed taken aback. No point in coming now, he said tonelessly. But the house, I protested. My lawyer will get in touch with you. Till then, please keep the keys with you. The line got disconnected. The impersonal voice, did it really belong to his son? That he, who throbbed with life and warmth, could have such a child troubled me. I could not keep away from the house. I could not let the plants wither. The lawyer had come and taken the keys. What about the plants? I blurted out. He gave me a strange look and walked away. I took to watering the plants daily. My husband thought I had gone quite crazy. So did the neighbors who saw me tending the garden. He has left the house to you? One of them asked insinuatingly. Maybe, I replied tongue in cheek. After that, nobody dared approach me, but
comes back. You laughed even more the day I had all the plants carried away to my house. I didn't care. And then one day he arrived, the heir, to survey and evaluate his property, I suppose. What else could he have come for now after a lapse of 2 years? He looked around at my blooming garden. I want to thank you for looking after my gardens, he said solemnly. He needed no looking after, I replied. We were just good friends. He cleared his throat. I believe you took away my father's plants after his death. Stunned, I stared at him. I have bought a house. We plan to settle in India. My wife is very fond of gardening and choking back my anger, I said, you can have your brother, father's plants back. They belong to you. I would have asked, but you see, my wife. It's all right, I said stonily. They were not mine anyway. You can keep one or two if you like, he offered. No, thank you, I said, curbing the sudden urge to cry. You can take them home. He stood looking at my puckered face and shrugged and said, thanks anyway. Thanks for looking after them, and walked away. Thank you so much, Ashlata, and it's been quite a read for you, I believe. She's just a soft-spoken person, and she has a very keen eye for detail. Often you can find her in eyes. She's just sitting quietly in one corner and observing everybody. So that observer, writer's eye is very evident in her writing. Beautiful. Thank you so much for the presentation, ma'am. Really honored. And now we move on to our next presenter, Abha Jha. Abha Jha writes in Maithili, and Maithili we've had a lot of participants from Mithilanchal actually. It's very interesting how generally we talk about God Ram, Bhagwan Ram, but if you go to Mithila, Ram is Damat for them, you know. The girls they will say, "No, hamara jija hai," you know. And there's a sweetness in it, which I will tell you about Abha Ji also. She writes poetry in Maithili and Hindi languages. She's a resident of Delhi, and she has 2 collections of poetry in Maithili language to her credit, and she has the distinction to present her poetry in a sweet recitation form, and I've been witness to it, so I can really imagine. आभा जी आप शुरू करेंगी, आप मैथिली में भी बोल सकती हैं, 10 से 12 मिनट समय ले लीजिएगा जी। सभी को नमस्कार। ये तो होता ही है, this is kind of a law, you know, when you have to decide something, the voice goes for a toss. सबसे पहले साहित्य अकादमी का आभार, और आज मैं कहानी जो पढ़ूंगी तो मैथिली में बस एक पैराग्राफ, उसके बाद मैं हिंदी में जरूर बोलूंगी ताकि सबको समझ में आ सके। मुझे एक पैराग्राफ जरूर सुनाना चाहती हूँ कि आप लोग इसे समझ सके कि कितनी साम्यता है हिंदी में और इसमें। कहानी का शीर्षक है व्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी शब्द समझ ही गए होंगे सबको। अस्पताल निवृत्त एकांत कक्ष जरा आइसोलेटेड वार्ड कहल जाइ छै, में मृत्यु शैया पर पड़ल अंजलि। बीच में नाक पहुंच अपने डॉक्टर अभय देख है, नर्स के किस निर्देश दे पानी केस दे। नर्स सीलिन सब दवाई आ किस पेय पदार्थ पियावे, फूल भरोस से हो जाए कहे, ठीक हो जाओगी नंदिनी, अपने भीतर जीने का जज्बा तो जगाओ। उनसे अधिक संक्रमण लेकर आए मरीज भी ठीक हो जाते, तुम कोऑपरेट ही नहीं करती। मुरा कोऑपरेट तो वो करे जगह जीवा की इच्छा हो। नंदिनी आए नहीं, सारवा पढ़ने गए बेचल। खाली सांस ले जो जीवन होई छै तो जीवन छली, आप तो पीड़ा का अनुभव नहीं होई छै हुनका। जीवनक सबटा आशा समाप्त भ गेलै, सब किछ खत्म भेलो उतर अतीतक ओ शब्द साँझ करब सुरक्षित नहीं जे एक ही क्षण में हुनकर आशियाना ढाई देने छलै, मान सम्मान भूमि साथ कर देने छलै, आ एके बेर में खूब अन्हार
छोटी छोटी दो कहानियां पढ़ ली 5-5 मिनट से। शीर्षक वही है कि उच्चारण उसी का हिंदी रूपांतर मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। अस्पताल का निवृत्त एकांत कक्ष, जिसे आइसोलेटेड वार्ड कहा जाता है, में मृत्यु शैया पर पड़ी है नंदिनी। बीच बीच में नाक को ढांपे हुए डॉक्टर आते हैं, देखते हैं, नर्स को कुछ निर्देश देते हैं और निकल जाते हैं। नर्स सीने से कोई दवा देती है, फिर कुछ पेय पदार्थ खिलाती हुई तसल्ली सी देती कहती है, ठीक हो जाओगी नंदिनी, अपने भीतर जीने का जज्बा तो जगाओ, तुमसे अधिक संक्रमण लेकर आए मरीज भी ठीक हो जाते हैं, पर तुम तो कोऑपरेट ही नहीं करते। पर कोऑपरेट तो वह करे जिसे जीने की इच्छा हो। नंदिनी आज नहीं, वर्ष भर पूर्व ही मर चुकी है। केवल सांस लेना यदि जीवन होता है तो वह जरूर जीती है, पर कोई संवेदना उसे छूती नहीं, किसी तरह की पीड़ा की अनुभूति भी उसे नहीं होती। जीवन की सभी आशाएं समाप्त हो गई, सभी रस सूख गए, बचा है केवल अभिशाप का ठूंठ, बीमार शरीर का कंकाल। किंतु सब खत्म होने के बाद भी अतीत की वह अभिशप्त शाम कहाँ होती है नंदिनी को। इसने एक ही क्षण में उसका सुंदर आशियाना धराशायी कर दिया, मान सम्मान भूमि साथ कर दिया था, और एक ही झटके में संपूर्ण प्रकाश से घनघोर काला अभाव सदा के लिए माथे पर लिख दिया करती थी। बीच बीच में बुखार होने लगा था नंदिनी को। डॉक्टर के पास जबरदस्ती ले गए थे राजेश। छोटी मोटी बीमारियों को बीमारी कहाँ समझती थी वह। वहां जाते ही दुनिया भर के परीक्षण लिख दिए डॉक्टर ने। लगभग 20,000 के बिल बन गए। रास्ते में वह झुंझलाती हुई सी बोली भी, पूरे महीने का बजट बिगाड़ दिया अस्पताल में। ऐसा क्या हो गया था मुझे कि इतने टेस्ट कराने जरूरी हो गए। सब पैसा कमाने की चौचले हैं। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने जरूरी समझा होगा तभी तो लिखा होगा ना। और तुम स्वस्थ रहो तो पैसा क्या चीज है, कहते हुए राजेश ने ड्राइवर की नजर बचाकर हल्का सा चुम्बन ले लिया। आज फिर से बुखार बढ़ गया था नंदिनी का। कमजोरी से भी बुरा हाल हो रहा था। आज रिपोर्ट भी आने वाला था। राजेश ने आज दफ्तर से छुट्टी ले ली थी और रिपोर्ट लाने गए। नंदिनी सोच रही थी राजेश आए तो आज अस्पताल चली ही जाऊं, उस ताकत की दवा तो ले ही आऊंगी। पर यह क्या, राजेश गुस्से में तमतमाते हुए आए और सारे रिपोर्ट्स जमीन पर फेंकते हुए चिल्लाने लगे। ओह, वे शब्द थे या जहर के नश्तर। बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो, मेरे साथ पातिव्रत्य और समर्पण का ड्रामा और पीछे व्यभिचार। छे, घृणा से देह सिहर रहा है। क्या बोल रहे हैं आप, होश में तो हैं? जब से आए हैं अपमानित किए जा रहे हैं। एक तो मुझे इतनी कमजोरी हो रही है कि खड़ा भी नहीं हुआ जाता, और आप अपनी बातों से पत्थर मारे जा रहे हैं। कमजोरी नहीं होगी, तुम जैसी कुलकलंकिनी को जो ना हो वही कम। बस नहीं, आज बस नहीं, तुम्हारा पोल खुल गया, घृणित बाजारू औरत। नीच, इतनी आग थी शरीर में जब मुझे शांत नहीं होती थी। मेरी नहीं तो बच्चों की भी चिंता नहीं। हे भगवान, मैं अब तक नाली के कीड़े को सर पर चढ़ाता रहा। सर थाम कर बैठ गए राजेश। आप क्या बोले जा रहे हैं और क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया? हाँ, दिमाग ही फिर गया है। एड्स हुआ है तुमको, मेरे साथ विश्वासघात के फलस्वरूप। न जाने मेरा भी सर्वनाश किया, और इससे अधिक सुनने का साहस नहीं था नंदिनी। वह चेतना शून्य हो जमीन पर गिर पड़ी। और उसके बाद क्या? हुआ? घर के सदस्यों की मीटिंग, बच्चों को दादी के हवाले करना, नंदिनी को सरकारी अस्पताल में पटकना, यह सब एक ही दिन में हो गया। ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, ना कोई चिरह, ना कोई आराम। नंदिनी बस इतना ही सोचती रही। 7 वर्षों के दाम्पत्य जीवन का आधार मात्र शरीर था, जिसे वह व्यर्थ ही प्रेम समझती रही। उस पढ़े लिखे पुरुष ने एक बार भी सोचने की जहमत नहीं उठाई कि कोई और भी कारण हो सकते हैं इस बीमारी, जैसे बीमारी के बच्चे के जन्म के समय खून चढ़ना, कोई इन्फेक्टेड सिरिंज या कोई और कारण। वह
बीमार भी कितना रही थी गर्भावस्था के दौरान। उस दिन के बाद से यह एकांत कक्षी उसका आश्रय स्थल है। वह दिन भर दीवार देखती रहती है, मृत्यु की आहट सुनती रहती है। मायके या ससुराल से कोई एक बार भी पूछने नहीं आया कैसी हो। कोई 4 वर्ष की स्नेहा और 1 वर्ष के स्वामी को एक बार भी मुलाकात कराने नहीं आया। सबने आरोप प्रमाणित कर सजा सुना दी, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सुने। पर ईश्वर आप तो जानते हैं ना, मैं व्यभिचारिणी नहीं हूँ मैं उल्टा। पिताजी, माँ, अच्छा हुआ आप दोनों पहले ही मर गए, नहीं तो आपकी भी गवाही बेकार साबित हुई। दूसरी कहानी है प्रगति, जिसका हिंदी रूपांतर ही बहुत छोटी कहानी है। मनोचिकित्सक के पास से सेशन लेकर आई चेतना निढाल होकर बिस्तर पर लेट गई और पास में बैठे एक बहुत बड़ी कंपनी के सीएमडी मिस्टर रॉय वे एकटक निहार रहे हैं। और काम ही क्या है उनके पास? यह वही मिस्टर रॉय हैं जो कभी भी निश्चिंत होकर 5 मिनट भी पत्नी के पास नहीं बैठे होंगे। काम काम और बस काम। पत्नी के पास भी कौन सा समय? मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी सुख सुविधाएं तो बहुत देती है, बैंक बैलेंस भी बढ़ाती ही जाती है, पर प्रसव की बात भूलकर भी ना करे। तन और मन देते रहे, वह धन का कोष बढ़ाती रहती है। सो पति के साथ अच्छी बुरी बात करने की, मान व्यवहार करने की फुर्सत कहाँ थी चेतना के पास? उनके घर में सब कुछ यथावत होता, यहाँ तक कि दाम्पत्य संबंध भी यंत्र की भांति ही संपादित किए जाते थे। मानो दोनों ओर सभी जरूरी काम करते करवाते। पर आज 55 वर्ष की चेतना के पास मनोचिकित्सक के पास जाने का समय ही समय है और 58 वर्ष के मिस्टर राय भी सब काम धंधा छोड़ पत्नी के अवसाद के साक्षी बने रहते हैं रात दिन। नौकरी छोड़ने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था मिस्टर रॉय के पास, क्योंकि मनोचिकित्सक का कहना था कि ये चेतना घर में अकेली रही तो उनकी हालत बदतर हो सकती है और कभी भी मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ सकता है। अब यादों की पूर्व दुनिया में उलझना ही मिस्टर रॉय का भी शक्ल हो गया है। वह दिन अच्छी तरह याद है मिस्टर रॉय को, जब पहली बार चेतना ने कंसीव किया था। अपने बिंदास स्वभाव के उलट कुछ हिचकिचाती सी चेतना पास आई और कहा, यह झंझट भी अभी ही आना था जो मुझे अगले ही महीने 3 महीने के अनुबंध पर चीन जाना है। आप तो जानते हैं ना, कितने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ कर मैंने अपनी योग्यता और परिश्रम के बल पर यह अवसर पाया था। अब मैं अकेली यह समय विदेश में कैसे काट पाऊंगी? यदि कोई समस्या हो गई तो ऐसी स्थिति में क्या करूंगी? कहते कहते आंखों में आंसू आ गए चेतना के। दाम्पत्य जीवन के सुखद पूर्ण की संभावना ने खुशी नहीं परेशानी में डाल दिया था चेतना। What nonsense! इसमें रोने की क्या बात है? कल ही नर्सिंग होम जाकर मुक्ति पा लो इस झंझट से। After all, तुम एक कैरियर ओरिएंटेड महिला हो और मैं भी अभी बहुत व्यस्त हूँ। इन दकियानों सी बात चीजों के लिए समय नहीं है अभी हमारे पास। हमें अभी बहुत तरक्की करनी है, बहुत आगे जाना है। इन सब झंझटों के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है। आप चलेंगे मेरे साथ अस्पताल? अकेले जाते अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अजीब सा। नो वे, मेरे ऑफिस में कल सुबह ही विदेशी डेलीगेट्स आने वाले हैं। बहुत बड़ी डील होने वाली है, सो मैं तो नहीं जा पाऊंगा। और तुमने बात भी बड़ी अजीब सी की। अच्छा न लगने की क्या बात है अस्पताल जाने में? लगता ही नहीं तुम इतनी बड़ी कंपनी की कॉन्फिडेंट जनरल मैनेजर हो जो कुछ स्त्री सुलभ गुजराती। कुछ पति की बातों ने, अपनी शिक्षा ने, आगे जाके और प्रतिष्ठा ने दबाकर नीचे कर दिया और वह घंटे भर में फ्री होकर आ गई। उसके बाद 10 वर्षों तक कोई होश नहीं था, न चेतना को और न ही मिस्टर राय। जब होश आया, परिवार की जरूरत महसूस हुई, संतान उत्पन्न करने की इच्छा हुई, तो बहुत देर हो चुकी थी। बहुत इलाज कराया, बहुत दौड़ धूप की, लेकिन केमिकली अनफर्टिलाइज्ड फूड पर बिरवा उड़ ही नहीं पाया।
चेतना को जीवित भी अपनी कोख की संतान को जन्म देती। इलाज की कोई कमी नहीं हुई। मिस्टर रॉय उसे लेकर अमेरिका तक गए, पर भगवान की इच्छा। परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे अवसाद की ग्रंथि बढ़ती गई। नौकरी छोड़ दी, खाने पीने में रुचि नहीं रही, किसी की गोद में बच्चा देखकर दौरा सा पड़ने लगा। आज भी 6 महीने से लगातार इलाज करा रही चेतना की हालत देख मिस्टर रॉय दिन रात अपनी भूल पर पछताते हैं, समृद्धि की अनंत हसरत पर लानत भेजते हैं, पर अब पछताए को क्या, जब चिड़िया चुकी थी। आज भी मिस्टर रॉय निहार रहे हैं अपनी प्रगति को, चमचमाते घर को, मूल्यवान वस्तुओं को, विदेशी गाड़ी को और घर में प्रेत की तरह घूमते प्राणी को। वे खुद भी तो दुर्लता की ओर ही बढ़ते चले जा रहे हैं। धन्यवाद। Thank you, Akaji. Thank you so much. Like they say that we are supposed to love people and use things, but what is now happening is that we use people and we love things. बहुत सुंदर तरह से इसी बात को आपने रखा अपनी कहानियों में। I will move on to our next short story writer, Shri S. Mahadevan Sampiji, who is a renowned name in current Malayalam fiction, an acclaimed novelist and a short story writer. His novels on Kashmir and Sri Lanka are testaments to the immeasurable beauty of empathy and creativity of the author. Thampiji has published 11 works of fiction. Most of his works have been translated into English and many other Indian languages. Thampiji was the additional director with the Information and Public Relations Department, and he now serves as a media consultant. Shri S. Mahadevan Thampiji. Namaskar. I am delighted to share a short story around in Malayalam, translated into English by Sri P. Mulligan. Breathe in tears. Sitting on the desert garden, circular platform. Sitting on the desert garden, circular platform built around the ancient banyan tree, considered sacred by the Hindus. The nation watched the black blanket of darkness slowly falling over the hill, Pattayakul in Kannur, in the northern part of Kerala, recently in the news for violent political clashes. Memories flooded back into him of evenings spent with his father, watching the sunset from the very spot. His father would speak of a huge black umbrella unfurling and coming down from the hilltop, an observation that painted the landscape in the nation's mind. How vivid was his observation. In those moments, the nation saw his father, Paramban Padmanabhan, not just as a teacher, but as a true poet. While his father was stern at school, at home he was a storyteller, a poet, and at times a very good companion. The memory of his father ignited a blaze of grief and a fierce determination in the nation's heart. He reassured himself today's act would be the most divine tribute to his father. Surveying the surroundings, the nation noticed most houses were cloaked in darkness. People had either left or covered inside, fearing the assailants' blade and bombs that had over Pattayakul like a dark cloud. His hand passed against the concealed knife, reaffirming his resolution. He could unmistakably identify that house and the man in any darkness. This was his third attempt in 7 years. His other 2 attempts were in vain due to several issues. The nation's father was nearly a saint, a gentle soul, except for his association with a particular political movement. Many advised him to steer clear of politics, but his father believed it was vital for him to show where he stood in life. His father thought the threat to his life was a hoax because he had done nothing to attract the opponent's wrath. The nation vividly records the shock
on his father's face as a gang of thugs led by Chokli Vasu, wielding bombs and matches, emerged on the cold wintry morning the next day. It all happened very quickly. The nation didn't know how, but he had somehow managed to crawl under the father's bed. Even though he saw his father collapsing from the blow of Vasu's passes, he couldn't muster even a feeble sound, let alone scream for help. His father pleaded, "Son, water please." A cup and a glass were within his reach, but he remained immobilized. There was no strength left in his limbs to provide the water his father desperately needed. Meanwhile, the heartbreaking sobs of his mother in her final moments rose from the adjacent room. When Dinesh was certain that his had departed, he fled in terror, confounded by the lifeless forms of his parents. On the third day, as he was searching for his hands home in Manandavadi, a hilly region far away from Pathayakuru, it seemed he had lost his sanity. His aunt remarked, "It is a blessing that at least you have survived." He still couldn't summon tears. Instead, he made a swollen fool. If not then and there, then someday in the future, he could exact vengeance on Chuklivasu in the same manner he had with the nation's parents. From then on, he had attended a school near his house, but he couldn't focus. Opening a book, he saw Vasu standing with a machete, his father's death was echoing louder than the teacher's voice. News of the events in Pathayakam reached even Manandavadi. His aunt shared the news that Vasu's house was attacked and some of his associates were killed. His aunt hardened with a deep disappointment that Chokli Vasu was still alive and was recovering in the hospital. Last Sunday, he learned that Chokli Vasu had returned home. Vasu had a boy were the only occupants in that house. The nation travelled from Manandavadi and waited under the banyan tree. When it was dark and there were no people around, the nation came down from the altar. He walked on the path to his left and reached Chuklivasu's front. As the nation stepped into the courtyard, he tightly gripped the knife at his waist with one hand. Just as he stepped in, he heard a groan, "Water, water." The nation peered through the open window, finding a weakened figure on a wooden cot, pleading for water. In that dim light, the nation recognized him, Chokli Vasu. The nation watched intently. The boy lying on the mat below remained oblivious to Vasu's calls, which grew increasingly urgent. As Vasu's pleas reached a crescendo, the boy finally tripped from his slumber. He hastily grabbed the water jug, pouring it into the glass, all the while glancing toward the open window. It was if he had caught sight of the nation, for he jolted, accidentally releasing the glass and mug before shifting, retreating under the bed. Vasu seemed to detect the movement and weakly called out, "Who is there?" Knife in hand, the nation remained silent and cautiously approached Vasu's bed. A muffled weeping sound fell on the nation's ear as he aimed the knife at the figure laying on the bed. Till his mind faltered, Vasu's resolve shaken. When he listened closely, he realized that the sound came from the boy hiding under the coat. The nation stood still for a moment, but Vasu, still not grasping the gravity of the situation, persistently pleaded for water. Opening his eyes, Vasu likely realized that his calls for water were in vain. He appeared unfazed by the sight of the nation standing before him, armed with a ready knife. Vasu's lips twitched. "Who are you?" Bringing his face closer to Vasu's eyes, the nation said loudly, "I am the nation,
son of Padmanabhan, the son of Padmanabhan, you murdered 7 years ago. Chukrivasu closed his eyes for a moment, snapping them open in an instant. Then he spoke, leaving the nation in stunned silence. My luck. It is my luck that brought you here. Vasu paused and then continued. I have endured this living nightmare for far too long. Every mistake from my part has exacted its rightful toll. This time it was my spine and paid the price. The doctors told me the spinal cord is severe. I have had my fill for this vegetative existence. I cannot even get up and commit suicide. I refuse to be sent to bed for the rest of my days. Do what you come here to do before the voice wakes up. Then Vasu packed his lips in a pleading manner and spoke. Before that, a glass of water. Yes, sir. Hearing those words, the nation felt his strength vanish. Was his soul faltering? This was exactly what Padmanabhan, his dad, had prayed for on a similar night 7 years ago, when he was laying in the ground after getting packed out. My son, water. But the nation recalled with shame that despite hearing the plea, he hadn't found the courage to emerge from beneath the bed. He hadn't even shed a tear. The memory may have spurred the nation to look beneath the bed now. In the darkness, two shining eyes met his, burning with fire. A boy, terrified yet resolute. His eyes were wide open. The nation's control slipped. He felt something escaping him. Meanwhile, the voice repeated, my son, water. Confusion swept over the nation. He felt as though something went black with him. Whose voice was this? Who was asking for water? Suddenly it hit him. Wasn't his father's voice? Wasn't it his father pleading for water? Isn't that a muffled cry? Was it that for himself, the scared child hiding beneath the bed, who couldn't summon the courage to help his father? He didn't hesitate any further. The nation did not know when, but the knife fell from his hand. It held the death from which water flowed into the glass. At that moment, the darkness surrounding Patayakam began to lift. That's all. Thank you. Thank you so much, sir. And now I move on to our last story writing for the session, post which, of course, we will have a discussion, and the chair, of course, will give his remarks. Shri Ashok Jamnani is with us. He is a noted poet and fiction writer in Hindi. His first novel, Ko Aham, has run into 12 editions. Ko Aham has run into 12 editions. We can have a round of applause. Yes. And apart from this, he has 9 publications to his credit. He penned lyrics for several albums. He is a recipient of the Veer Singh Judev National Award, Dushyant Kumar Puraskar, Kriti Puraskar, and an award by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Now, since this has piqued our curiosity, आप इसके बारे में भी कुछ बताएं, क्या है ये कृति आपकी, और फिर अपनी कहानी हमें पढ़ते हैं। जी, अशोक जमनानी जी। नमस्कार। सबसे पहले तो साहित्य अकादमी और आप सभी के प्रति बहुत आभारी हूँ। मेरा ये उपन्यास है वो हम स्टार्ट होता है, आप सब जानते ही हैं मैं कौन हूँ, हु एम आई। और मैं नर्मदा के किनारे रहता हूँ। उस शहर का नाम अब नर्मदापुरम है। 2 साल पहले तक उस शहर का नाम होशंगाबाद था। और वहीं नर्मदा के किनारे रहते रहते एक युवा सन्यासी से मुलाकात हुई जो 19-20 साल का लड़का था और सामान्यतया पुरुष जितने दिखने में अच्छे होते हैं उनसे बेहतर और बहुत सुंदर लड़का था और सन्यासी हो गया था। उसके मन में मृत्यु को लेकर के बहुत सवाल उठा करते थे। हम सब की जो परवरिश हुई है वो इस तरह से थी। होशंगाबाद बहुत छोटा शहर है, तो हम लोग रोज शाम को वहाँ जाते थे घाट पर, तो वो वहीं बैठा रहता था। और फिर उससे एक मित्रता हुई। उसने बताया कि उसके मन में ढेरों सवाल हैं
और उन सवालों को जवाब पाने के लिए उसने संन्यास ले लिया है। जब मैंने उससे पूछा कि उसके घर में और कौन कौन है, तो उसने बताया कि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और एक लड़की है जिससे वो बहुत प्यार करता है। तो मैंने उससे पूछा था कि तुम जब ये छोड़ करके सब आ गए तो उन सब का क्या हुआ? तो उसने कहा कि अगर मैं उनके साथ रहता तो ज़्यादा बड़ा नुकसान ये होता कि वे पागल हो जाते, क्योंकि मैं इतने सवाल पूछता हूँ कि कोई भी मुझसे घबरा जाए तो मैं उन्हें पागल कर देता। इससे अच्छा मैंने संन्यास ले लिया। तो मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारा ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि तुमने अपने सवालों के जवाब पाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया और जिससे तुम इतना प्रेम करते हो उसे छोड़ दिया। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, और फिर ये कहा इतनी सी उससे जो मुलाकात थी वो मेरे जहन में रह गई। और जब लिखना शुरू किया तो जो पहला उपन्यास मैंने लिखा वो हम है, ये नर्मदा तट की उस परिक्रमावासी सन्यासी की कहानी को मैंने फिर अपने हिसाब से उसे जो विस्तार देना था उसे उस तरह का विस्तार दिया है। इस कहानी में वो है, उसकी प्रेमिका है, उसके माँ बाप हैं, वो जिस व्यक्ति के साथ जो गुरु है उसके साथ जो यात्रा कर रहा है वो गुरु की कहानी है, और साथ में थोड़ी सी नर्मदा की कहानी और नर्मदा की सुंदरता है। तो इस पर अभी एक फिल्म बनी है जो अभी जियो सिनेमा पर आप देख सकते हैं, UMI के नाम से। और अच्छी बात यह है कि उस फिल्म को दुनिया के 20 देशों के फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया। ऑफिशियल एंट्री थी और मुझे उनमें से एक ने मुझे बेस्ट स्टोरी राइटर के लिए अवार्ड भी दिया। तो ये कहानी तो नर्मदा की परिक्रमावासी की थी, लेकिन इस किताब ने शायद मुझे लेखक बना दिया। और मैं जो कहानी पढ़ने जा रहा हूँ उस कहानी का शीर्षक है, मेरे शहर का नाम पहले होशंगाबाद था, अब उसका नाम नर्मदापुरम है, लेकिन जो कहानी पढ़ने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है होश अंग आबाद मतलब होशंगाबाद। धक 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 कपड़ा पटकाने की आवाज सुनकर वर्मा जी घर से बाहर आ गए। क्या जमींदार साहब, आज फिर आप सुबह होने से पहले शुरू हो गए? अरे आपको अपनी नेम प्लेट को चमकाना है तो चमकाइए, लेकिन आप सफाई के इस कपड़े को इतनी जोर जोर से पीटते हैं कि हर वो नींद खराब हो जाती है। और फिर ऐसा है भी क्या आपकी इस नेम प्लेट में? किसी को मतलब तो समझ में आता नहीं है आपकी इस नेम प्लेट का क्या लिख रखा है। क ख ग होश अंग आबाद। अरे क ख ग ये भी कोई नाम हुआ? उस पर अच्छे भले शहर होशंगाबाद का नाम भी टुकड़े टुकड़े करके लिखा है, होश अंग आबाद। वो तो अच्छा हुआ, अब इस शहर का नाम बदल गया। होशंगाबाद अब कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अब आप भी अपनी नेम प्लेट पर नया नाम नर्मदापुरम लिख लीजिए। वर्मा जी झुंझलाते हुए भीतर चले गए। वे जमींदार साहब के पुराने मित्र और पड़ोसी हैं। अक्सर दोनों की सुबह की शुरुआत इसी तरह होती है। वे भीतर गए तो जमींदार साहब फिर से नेम प्लेट को चमकाने लगे। आजादी के बाद जमींदारी तो खत्म हो गई, लेकिन लोग उन्हें अब भी जमींदार साहब कहते हैं। उन्होंने एक अजीब सी आदत पाल रखी है। हवेली में बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन सुबह उठकर हवेली के गेट पर लगी नेम प्लेट को वो खुद चमकाते हैं। नेम प्लेट भी अजीब है, लिखा है क क ग होश अंग आबाद। कोई पूछे तो कहते हैं भाई ये नाम है मेरा क क ग। क मतलब मैं कर्मवीर, ख मतलब मेरे पिताजी खरारी नाथ, और ग मतलब मेरे दादाजी गया प्रसाद, मतलब कर्मवीर खरारी नाथ गया प्रसाद। नाम तो बता देते हैं, लेकिन होश अंग आबाद क्यों लिखा है ये नहीं बताते हैं। वैसे तो कई कहानियां हैं उनके परिवार की। चलिए समय का हाथ थाम कर कुछ पीछे चलते हैं तो मुलाकात होती है जमींदार साहब के दादाजी मतलब गया प्रसाद जी से। वो आजादी से पहले का दौर था। गया प्रसाद जी का यौवन क्रांति और प्रेम के सुर एक साथ साधने लगा था। बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन क्रांति और प्रेम में कुछ अजीब होना अजीब कहाँ माना जाता है। तो गया प्रसाद रात में पर्चे बांटते, गुप्त सभाओं में जाते और बंदूक चलाना सीखते, लेकिन सुबह होते ही नाव में बैठकर नर्मदा के उस पार अपनी प्रेमिका से मिलने चल पड़ते। घाट से लगी हुई तो उनकी हवेली थी, जिसे उनके पिता ने बहुत चाव से बनवाया था। नाव के खेने वाला हरिकेवट उनकी प्रेम कहानी को जानता था, इसलिए आते जाते वक्त कोई न कोई प्रेम गीत गाता था।
लेकिन प्रेम गीत गाने से पहले वो अपनी नर्मदा माई का जस गाना नहीं भूलता था। वो गाता था, नर्मदा मैया बिनती सुनो रे, बिनती सुनो रे, जस गाए तेरे दिन रात हो, नर्मदा मैया हो। जस गाकर वो फिर से प्रेम में डूबा कोई गीत गाने लगता। उसकी आवाज में जो तड़प थी, जो दर्द था, जो कशिश थी, वो गया प्रसाद जी के निश्चय को दृढ़ करती थी कि चाहे जो हो जाए, जीवन तो बस उसी लड़की के साथ बिताना है। लेकिन प्रेमी के संकल्प पर होनी भारी पड़ गई। दोनों की जाति अलग अलग थी, इसलिए प्रेम कथा अधूरी रह गई। लड़की और गया प्रसाद अपने अपने घर में बुरी तरह से कूटे पीटे गए। वो दौर भी ऐसा था कि जब बच्चों से कोई बात मनवानी होती थी तो कूट पीट कर ही मनवाया जाता था। लड़की की शादी कहीं और हो गई तो गया प्रसाद जी ने प्रेम के साथ साथ क्रांति का सुर साधना भी छोड़ दिया। देश आजाद हुआ तो गया प्रसाद जी की आजादी पर विवाह का बंधन मान दिया गया और शादी के अगले वर्ष ही जन्म हुआ खराड़ी नाथ का। खराड़ी नाथ का यौवन आया तो प्रेम उसके भीतर में वैसे ही दहक उठा जैसा कभी उसके पिता के हृदय में दहका था। पिता ने जिससे प्रेम किया उसकी जाति भिन्न थी, लेकिन खराड़ी नाथ का प्रेम तो धर्म की दीवार भी लांघ गया। जिस लड़की से उसे प्रेम हुआ वह ईसाई थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और माँ अस्पताल में नर्स थी। छोटा सा तो शहर, बात सूखे जंगल में आग की तरह फैल गई। गया प्रसाद तक बात पहुंची तो उन्हें अपना प्रेम याद आया, लेकिन समाज का दबाव इतना बढ़ा कि उन्होंने सिर झुका दिया और एक प्रेम कथा फिर से अधूरी रह गई और एक बेहद अमीर घर की लड़की सुवर्णा से खराड़ी नाथ का विवाह हो गया। सुवर्णा बहू बनकर आई तो कुछ ही दिनों में उसने पूरी हवेली को एहसास करा दिया कि हवेली में अब बस उसका ही सिक्का चलेगा। उस पर हुआ ये कि 1 वर्ष के भीतर ही कर्मवीर का जन्म हुआ तो हवेली तो सोहर गांव थी, लेकिन सुवर्णा का सिक्का पूरी तरह से हवेली पर जम गया। देखते ही देखते कर्मवीर भी बड़ा हो गया। वो अपने पिता के पास बैठता और बसंत ऋतु में कोयल का गाना सुनता तो खराड़ी नाथ उससे कहते कि कोयल गा नहीं बेटा, कोयल गा रहा है। कर्मवीर पूछता था कि बाबूजी कोयल गाती है? वो कहते थे नहीं बेटा, कोयल गा रहा है। बसंत आए और बौर में सब कुछ बौरा जाए तो किसी की औरत को इतना हक नहीं होता कि जोर जोर से गा सके वो औरत, चाहे आदम जात की हो या कोयल जात की। सुवर्णा इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि कर्मवीर कहीं दाएं बाएं न देखे। गया प्रसाद और खराड़ी नाथ दोनों स्वर्ग से धार चुके थे। कर्मवीर भी सुवर्णा की हर बात में हाँ मिला रहा था, लेकिन दादा और पिता की प्रेम कहानियां उसे गाहे बहाए उसके दिल पर दस्तक दिया करती थी। फिर जिस लड़की को देखकर उसके दिल में पसंद जागा, उसके धर्म और जाति के बारे में उसने सबसे पहले पता लगाया। धर्म और जाति दोनों समान निकले तो उसने प्रेम की नाव को प्रवाह में उतार दिया। बात सुवर्णा तक पहुंची तो उसने लड़की के बारे में पूछताछ शुरू की। खबर अच्छी नहीं थी। लड़की का परिवार बेहद गरीब था। धर्म और जाति एक हुए तो क्या हुआ, सुवर्णा के लिए अमीरी और गरीबी की रेखा धर्म और जाति से बड़ी थी। उन्होंने लड़की के पिता को बुलवाया, तिजोरी का द्वार खोला और अगले ही महीने लड़की का पिता पूरे परिवार को लेकर कहां चल गया यह तो उसने सुवर्णा को भी नहीं बताया। सुवर्णा ने फिर वक्त नहीं गंवाया और कर्मवीर की भव्य शादी में आतिशबाजी की तरह एक क्षण के लिए उसके मन में प्रेम कथा चमकी और फिर राख हो गई। नई सदी के 2 साल पहले कर्मवीर के यहाँ बेटे का जन्म हुआ तो सुवर्णा ने उसका नाम रखा मयंक। मयंक अपनी माँ और पिता के बजाय दादी के पास ही अधिक रहा करता था। पढ़ाई में बहुत तेज था, इसलिए IIT में उसका चयन हो गया। वह दिल्ली चला गया और सुवर्णा 20 सर्विस सुधार गई। हवेली में अब सूनापन था। कर्मवीर और उसकी पत्नी शुभ्रा बेटे के आने का इंतजार कर रहे थे। मयंक की पढ़ाई पूरी हुई तो बहुत बड़ी कंपनी में भी उसकी नौकरी लग गई। अब उसके वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बीच कोविड का आक्रमण हुआ तो वह घर लौट आया और वर्क फ्रॉम होम करने लगा। कर्मवीर मयंक को देखकर पूरे नहीं समाते थे। जवान बेटा, तेज दिमाग और रूप रंग ऐसा कि जो देखे तो देखता रह जाए, लेकिन वो तो अपने पूरा दिन अपने कमरे में ही जुटा रहता। कर्मवीर सोचते ही बाहर क्यों नहीं जाता। हवेली की 3 पीढ़ियों की असफल प्रेम कथाएं उन्हें बार बार कचोटती रहती थी।
वे सोचते थे कि काश मैंटू को किसी से प्रेम हो जाए तो न वे धर्म देखेंगे, न जाति देखेंगे, न अमीरी गरीबी देखेंगे, वे पूरी शान के साथ उसकी शादी करवाएंगे और दुनिया को बता देंगे कि इस हवेली में केवल नेम प्लेट पर नहीं बल्कि दिल में भी होश अंग आवाज लिखा हुआ है। वे अपने सपने सजाए रहे थे। एक दिन सुबह सुबह वर्मा जी ने उन्हें नेम प्लेट पहुंचते हुए देखा तो उनके पास चले आए। जमींदार साहब, अब जमींदारी नहीं रही कि पूरे इलाके में क्या हो रहा है आपको मुखबिर आकर के बता जाएंगे, लेकिन हद तो यह है कि घर का जवान लड़का क्या बोल करा रहा है आपको इस बात की भी खबर नहीं। मैं तुमने क्या किया, क्या नहीं किया? आप तो जल्दी सो जाते हो। आपके सपूत 12 बजे घर से बाहर निकलते हैं रात में। सदर में एक लड़की किराए का मकान लेकर रहती है, उसके साथ सपूत जी रात बिताते हैं और सुबह आपके जागने से पहले घर लौटते हैं। अरे पूरे मोहल्ले को यह पता है, बस आपका ही होशंगाबाद नहीं हुआ, मेरा मतलब होशंगाबाद नहीं हुआ। वर्मा जी की बात सुनकर कर्मी एक क्षण के लिए तो सन्न रह गए, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें लगा कि आखिर उनके बेटे को भी किसी से प्रेम हो ही गया। अब मौका आ गया है, चाहे लड़की की जाति अलग हो, धर्म अलग हो, गरीब हो, मैं इनकी शादी को इतनी धूमधाम से करेंगे कि पूरे शहर को पता चल जाएगा कि होश अंगाबाद होता कैसे है। तो भीतर चले गए, चाय पी, नहाकर पूजा पाठ किया और ड्राइंग रूम में बैठकर महंग का इंतजार करने लगे। महंग वैसे तो 10 बजे ही अपने कमरे से बाहर आता था, लेकिन जब 11 बज गया और वो बाहर नहीं आया, उन्होंने शुभ्रा से पूछा कि महंग कर क्या रहा है। शुभ्रा कुछ कहती इससे पहले ही महंग अपने सामान के साथ बाहर आ गया। पापा, मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बेंगलोर। कोविड अब खत्म हो चुका है, मेरी कंपनी चाहती है कि मैं हेड ऑफिस देखूं, वैसे भी बहुत समय खराब हो चुका है। तुमने बताया नहीं? कल रात में ही तो बात हुई पापा, कुछ दिन और रुक जाते तो। कुछ दिन रुकने से क्या होगा पापा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। कर्मवीर को लगा कि उनकी बात सुनकर मैं चहक उठेगा। शादी? अभी तो मैं 24 साल का हूँ पापा, मुझे केवल नौकरी नहीं करनी है। दादी ने बताया था कि हमारी कितनी बड़ी जमींदारी थी, इस शहर ने हमसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब मैं सब कुछ हासिल करूंगा। पापा, आप जानते हैं जमींदारी अब जमीन से नहीं होती, जमींदारी इससे होती है कि हमारा कब्जा कितनी कंपनियों पर है। कंपनियां ही असली जमींदारी हैं। आप कुछ साल रुकिए, देखिए मैं कितनी कंपनियां अपने मुट्ठी में कर लेता हूँ। लेकिन तू प्रेम ही तो करता है ना? उसका क्या? प्रेम? पापा, प्रेम और शादी सब बकवास बातें हैं। प्रेम नहीं करते तो जिस लड़की के साथ रात में मिलने जाते हो वो क्या है? अच्छा, तो आपको पता चल गया। वो प्रेम नहीं है, वो शारीरिक जरूरत है, मेरी और उस लड़की दोनों की। प्रेम, शादी ये सब हिपोक्रेसी है। लोगों को अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करनी होती है तो कुछ लोग प्रेम का ढोंग करते हैं और कुछ लोग शादी का महाढोंग कर लेते हैं। सेक्स ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ बकवास है। कर्मी को लगा कि उसके सामने कोई और शख्स बैठा है। तू प्रेम नहीं करता, लेकिन जिस लड़की के साथ इतना वक्त बिताया है उसके बारे में सोचा है उसका क्या होगा? होगा क्या? जैसे मैं बेंगलोर में कोई और लड़की ढूंढ लूंगा, यूरोप जाऊंगा तो वहां कोई और लड़की ढूंढ लूंगा, अमेरिका जाऊंगा तो कोई और ढूंढ लूंगा, उसी तरह वो भी जहां जाएगी कोई ना कोई ढूंढ लेगी। पापा, वो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। तुझे इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आती? कर्मी लगभग चीखते हुए खड़े हुए। मैं अब भी तेरा बाप हूँ, 4 थप्पड़ मारकर तुझे ठीक कर सकता हूँ। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा पापा, मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा नहीं हूँ। थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे सकता हूँ। तू क्या मारेगा मुझे? कर्मी ने चीखते हुए कहा। मैं का कॉलर पकड़ा तो मैंने पूरी ताकत से धक्का देते हुए सोफे पर गिरा दिया। मैं जा रहा हूँ, लंबे समय तक नहीं लौटूंगा, और जब लौटूंगा तो इस मुल्क की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे पास होगी। आप अपना ख्याल रखना माँ। शुभ्रा समझ ही नहीं पाई कुछ देर में क्या हो गया। वह तो वहीं खड़ी थी और कर्मी देर तक सोफे पर वैसे ही बैठे रहे। फिर दोपहर ढलने लगी, उन्होंने शुभ्रा को आवाज दी। शुभ्रा, सफेद रंग का डब्बा और ब्रश ले आओ। शुभ्रा पेंट और ब्रश लेकर आई तो कर्मवीर हवेली के गेट पर गए और होश अंग आवाज पर सफेद रंग पोत दिया। वे भीतर जा ही रहे थे कि वर्मा जी आ गए। ये क्या जमींदार साहब, आपने तो होश अंग आवाज पर रंग पोत दिया, मतलब आपने मान लिया कि अब होशंगाबाद कहीं नहीं रहा। हाँ वर्मा जी, अब पूरी दुनिया में होशंगाबाद कहीं नहीं रहा, होशंगाबाद कहीं नहीं रहा। कर्मवीर भीतर चले गए। उस रात उन्होंने बहुत कम खाना खाया और जब लेटे तो कुछ ही देर में नींद आ गई। लेकिन आधी रात के बाद अचानक उन्हें ठंड महसूस हुई तो उठकर ये छाती मलने लगी। शुभ्रा की भी नींद खुल गई। उसने कर्मवीर की हालत देखकर बहुत घबरा गई। डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, दवा ले ली है, कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ। शुभ्रा ने उन्हें नींद की गोली खिलाई। अब आप भी सो जाइए,
सुबह होने में वक्त है। शुभदा, ये वक्त खत्म क्यों नहीं हो रहा? शुभदा, सुबह क्यों नहीं हो रही? शुभदा, सुबह क्यों नहीं होती? सुबह क्यों नहीं होती? शुभदा, सुबह क्यों नहीं हो रही है? शुभदा देर तक उनकी माथा सहलाती रही। कुछ देर बाद नींद की गोली ने असर दिखाया और जब ये जागे तो 10 बज रहे थे। नहाकर पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने शुभदा से कहा, मैं जरा घाट होकर आता हूँ। वे हवेली के पीछे वाले घाट पर पहुंचे तो देखा नीचे नाव लेकर गोपाल खड़ा है। मालिक आ जाइए, उसने पुकारा तो नीचे जाकर नाव में बैठ गए। नाव आगे बढ़ी तो उनकी नजर पानी पर पड़ी। गोपाल, ये नर्मदा जी का पानी कितना मटमैला हो गया है, लगता है पानी नहीं कीचड़ रह रहा है। पहले कितना साफ पानी हुआ करता था, बिल्कुल पानी जैसा पानी। मालिक, ये बरसात के पानी का बाद का पानी है, ये तो समय का भेद है मालिक, समय बदलने दीजिए, फिर ये पानी कीचड़ नहीं रह जाएगा, मिट्टी भी नहीं रह जाएगा। समय बदलेगा तो ये पानी फिर से पानी जैसा हो जाएगा। गोपाल की बात सुनकर करवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। सच कहता है तू, एक दिन फिर से ये पानी जैसा हो जाएगा। चल, आज तू गाना नहीं सुना रहा? करवीर सहज हुए तो गोपाल भी मुस्कुराया और उसने मिट्टी मिट्टी पानी को देख करके गाना शुरू किया। नर्मदा मैया दूधन बहे रे, दूधन बहे रे, त्रिवेणी बहे रसधार हो, नर्मदा मैया हो। गोपाल, तू तो बिल्कुल अपने बापू की तरह गाता है, वो आजकल आते नहीं। अब वो तो बूढ़े सयाने हो गए मालिक, घर पर ही रहते हैं। बूढ़ा हो गया? अरे वो तो मेरी उम्र का है, बूढ़ा कहाँ से हो गया? मालिक, अब आप भी बूढ़े हो रहे हो। गोपाल हंसा तो करवीर चौंके। सच ही तो कह रहा है गोपाल, उम्र का बड़ा हिस्सा तो वक्त के बहाव में बह ही चुका है। तो कुछ कहते इससे पहले ही गोपाल के जवान हाथों की पकड़ पतवार पर कुछ ढीली पड़ने लगी और नाव की गति भी रुकने लगी। करवीर ने सामने देखा, उस पार का किनारा पास आ रहा है, उस पार का किनारा बहुत पास आ रहा है। क्या बात है श्वेत जी, आपने तो क्या सामान बांधा है ना, सब कुछ जोर दिया कि सुनो सुनो सुनो, मैं बोल रहा हूँ सुनो, बहुत कमाल कर लिया। डामार किसने चाहिए? आकाशवाणी का चल लेकिन आकाशवाणी में 30 कहानियां प्रसारित हुई। आकाशवाणी में केवल 30 कहानियां प्रसारित हुई। माइक ऑफ कर दीजिए जरा, एक बार में एक ही माइक चलता है, ऐसा कुछ है। तो जब भगवान राम आपने वो प्रसंग सुना होगा कि केवट ने उतराई नहीं ली थी, जो क्योंकि उन्होंने नर्मदा मैया की गांव की जब बात की ना, तो केवट ने तो उतराई नहीं ली थी और ये बोला था कि जब हम भवसागर से पार होंगे तो आप हमें वो पार कराएंगे जो मेरी उतराई होगी। भवसागर जब इस दुनिया से जाऊंगा तो राम जी इस दुष्कर संसार से हमें आसानी से पार लगा लीजिएगा। तो हर रोज सुबह उठ के वो केवट जो है अपनी नाव की ऐसी प्रथा है ना, जो भी नदी किनारे रहते हैं वो जानते हैं कि ना सुबह उठेंगे तो स्नान करेंगे, सूर्य को जल चढ़ाएंगे, अपनी नाव पर भी टीका लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे नाव पे। तो बाकी केवट जो थे उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारी नाव पे भगवान स्वयं विराजे, वो तुम उनको पार कराया पूरी नदी, तो फिर क्या जरूरत है अपनी नाव पूजने की? तो क्या कहा केवट ने, जिस साधन से प्रभु मिले उस साधन को नहीं छोड़ना, है ना। तो यही जो है, देखिए जिस साधन से ये सब मिल रहा है, साधन तो हमारे, आप सभी साधक है, आप सभी हमारे पूजनीय हैं। All the short story writers, you know how meticulously they practice their craft every single time. With this, I hand over the mic to the chair for his remarks. Good afternoon. Today we expected a very engaging and very colorful storytelling session, which we have witnessed in all 4 stories. They all have different shades. First, the Aslam Madam, Aslapansal. This is amazing storytelling, and you have created some touching moment. You have distinguished style of expressing your story, and very captivating. I really enjoyed your story. And Abaja ma'am, this story holds us towards a wavering breeze of human crisis and emotional conflict. It uncovers astonishing moments bound to be hidden in everybody's life.
Hampi, yours is such a cool and well-crafted story. This illustrates the power of short story beautifully perceptively reflecting darkness, fear, injustice, anxiety, and bleakness of the world we live in, yet sought through with hope. Actually, regional stories have the power in them which are difficult for capture. Sometimes in city stories, when regional stories translate to a language like English or Hindi to reach a wider audience, it becomes a great read. So this was really an engaging short story session. Mr. Rausu actually he steals the show, and this engaging, consuming, and amazing story of a unique kind which kept us longing to experience nature, love, human relationship at its best, which crafted characters and plotting makes it even more interesting. You are literally the real storyteller. Congratulations. Storytelling is an art and not everyone can be an artist. Thank you, Sahitya Academy and everyone here, all the storytellers, my friends. Actually, we witnessed a great storytelling session which was very insightful and unique. I would love to interact with you more, would love to read more your stories. But for the timing, it's goodbye for now. You'll meet again. We have a little more time, and I would request all our storytellers, our story writers here, can you please, there is a lot of audience here. Archana ma'am, we will start with you. Some tips for budding story writers. How should we do it? And I would also, Mridula ma'am, Mridula ji is our 2013 Sahitya Academy Award winner, a prolific writer, sir, and an amazing raconteur. She is actually a दास्तान गो. ये जब कहानी अभी सुनाती हैं, तो मतलब आप सुनिए, yeah, it's beautiful. So I would just open the floor to our writers and Mridula ma'am also, of course. Ma'am, short story writing, ये जो विधा है, some tips if you could give, ma'am. We will of course open the floor. You know, life is a mystery. It unfolds at its own pace. A story also happens of its own accord. Time also takes a backseat. It may be 10 years, 15 years, and you come back to it. Like one story of mine, the blind bee likes to see that old man selling agarbattis. I went away, I left Delhi, I came back, he was still there. In the real life, he was blind, but not in my story. And a lot of my stories are like that checkmate. Yes. There is nothing actually, no truth in it as such. Maybe I observed the maid and the doctor and the detective part of it. I always read detective stories. Fish curry, all of them, every tale I tell, like I wrote in my novel, has a grain of truth embedded in it. It is for the reader to unearth it or leave it with it. Like in fish curry, they keep asking, was the oil contaminated? Did they die? Did he die? It's left open. She brought a can which was supposed to be contaminated, but what if it was not? It's like that. It comes to you naturally. One line comes, like my novel, this Rain in Bulandshahr. I wrote the first half. I took my notebook to Botswana, Africa, with just one line written on it. Black clouds hung overhead. Is it in first person? No, threatening to descend any minute. And they descended, the novella got written but not published. I came back to India after many years. I felt the urge to take it up, and the novel got written, Rain in Bulandshahr. So the story comes to you organically. Yeah, it comes to you when you are out walking, when you are doing something, when you are in the kitchen, when you are in the car. Sometimes when I am in the car, I observe the next car which stops next to me. What is her life like? What kind of house
household does she belong to? And I weave a story around. Great. Kamli sir, what has been your inspiration? You come from the land of white poem, you know. I mean, what is your inspiration? I mean, who are your favorite writers? Related? But why don't you say? Why are you shy of telling us the tips? Are these your trade secrets you don't want to divulge? Keep them to yourself? Yes, he's admitting that. Achha, we will come to Ashok ji then. We will come to Ashok ji then, and Ashok ji will tell us how and because I think a lot of churning takes place. देखिए इन्होंने कब वो कहानी वो लड़का कब मिला था ये वो युवा सन्यासी और लिखा शायद 2 दशक बाद. करीब 90s and then 2006. 16 साल बाद है ना सर. जो मैं ये कहानी लिखने में 1 मिनट भी नहीं. कि कई बार जो उसमें सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे प्रभावित किया वो है संवेदनशीलता. और ये संवेदनशीलता मेरे भीतर कैसे आई? हम सब जानते हैं कि हम सब में भीतर संवेदनशीलता होती है, लेकिन ये संवेदनशीलता आपको अनुभूति से अभिव्यक्ति तक कैसे ले जाती है? अगर मैं उसे कहना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि जो नर्मदा से मेरा रिश्ता है, बचपन से हम नर्मदा के किनारे जाते थे और मुझे जो लगता है कि अगर आपको कोई संवेदना ठीक से सिखा सकता है तो प्रकृति है. और मैं दूसरी बात जो कहता हूँ कि अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत संवेदनहीन हो रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि हम लोग संवेदनहीन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि प्रकृति के 2 हिस्से हैं, एक जो हमें बाहर दिखाई देती है और एक जो हमारे भीतर है. हमारा शास्त्र भी इसे कहता है, हमारे अंतःकरण को प्रकृति ही कहता है. इसके 4 हिस्से हैं जो हमारी फिलॉसफी कहती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार. तो ये हमारी अंतर प्रकृति और बाहर की प्रकृति का बहुत एक गहरा रिश्ता मैं महसूस करता हूँ. मैं देखता हूँ कि जब हमने नर्मदा पर बांधों की सीरीज बना दी और हम सारी नदियों पर हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो सारी नदियों के प्रभाव को रोक रहा है. अब मजे की बात यह है कि नर्मदा नदी नहीं है, नर्मदा भी रिजर्वायर है, क्योंकि उसके थोड़े थोड़े दूर बाद एक बड़ी दीवार है जो उसके प्रभाव को रोकती है. मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप नदियों के किसी भी मुल्क का मैं अगर नदियों के प्रवाह को रोकेगा तो उस देश के लोग संवेदनाहीन होते चले जाएंगे. अगर आपको संवेदना को बचाना है तो नदियों के प्रवाह को बचाइए. आप नदियों के प्रवाह को बचाएंगे. आप सबसे कहते हैं, बच्चों से कहते हैं कि ये बिल्कुल संवेदनाहीन हो गया है, लेकिन हमने जो किया, हमने क्या किया? हमने अपनी नदियों के साथ क्या व्यवहार किया? ये हमने अपने पहाड़ों को काटेंगे, हमारे भीतर का धीरज खत्म होता चला जाएगा. बरगद के पेड़ खत्म नहीं हो रहे हैं, लोगों का बड़प्पन भी खत्म हो रहा है. तो मैं देखता हूँ प्रकृति को इस तरह से और देखता हूँ जैसे जैसे प्रकृति का एक हिस्सा खत्म हो रहा है, हमारे भीतर की प्रकृति भी सूखती जा रही है. और मैं प्रकृति के जितने करीब जाता हूँ तो मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है. कविताएं, कहानियां सब मेरे पास आती हैं, कहती चलो मुझे सुनो और मुझे लिखो. This is so beautiful. Actually, this is what a writer, of course, is a creator. But if you notice, God is the biggest creator. Nature itself is so inspiring. आभा जी, आप कुछ बताइए. आपकी कहानियां जो हैं उसमें नारी की वेदना बहुत झलकती है, तो कुछ बताइए. आपने प्रेरणा स्रोत की भी पढ़ती आई है और कुछ टिप्स भी दें. बहुत धन्यवाद. मैं संस्कृत की छात्रा हूँ और हिंदी साहित्य से मेरा बचपन से ही जुड़ाव है. बचपन में पिताजी ये शिक्षक थे और लाइब्रेरी से बहुत अच्छी अच्छी किताबें लाते थे, तो शौक रहा है पढ़ने का बचपन से. लिखने की अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो लिखना है, मेरे पात्र आपको आसपास मिलेंगे, बिल्कुल आसपास मिलेंगे. जो कुछ आपको कि लगता है बहुत सामान्य सी चीजें हैं, बहुत खुश है, उस खुशी के भीतर क्या होता है, वह जो आर्तनाद होता है, मैं उसे सुनने की कोशिश करती हूँ. संवेदना सबके अंदर होती है, सब महसूस करती है. उसे ऑब्जर्व करना और फिर उसे शब्द देना एक
लगता है कि मैंने शायद थोड़ा सा मलहम लगाने का काम किया है। स्त्री पात्र तो मेरे कहानियों के कविताओं के पात्र हैं ही, होंगे ही। एक स्त्री होने के नाते मैं उसे अपने आप को कोरिलेट कर पाती हूँ बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे। लेकिन मेरी कहानियों के पात्र पुरुष भी हैं। एक कहानी है मेरी, मैं जो आज पढ़ना चाह रही थी फिर आज नहीं पढ़ा उसे, जीवन उदय। वहाँ मैंने उस नायक को लिया है जहाँ जो आज नारीवाद के झंडे के नीचे वह व्यक्ति, न उसने एक पैसे लिए विवाह में, न उसने कोई परंपराओं के जाल में उलझ करके उसने इंटरकास्ट मैरिज किया, माँ ने सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद उसकी एक बात नहीं मानने के कारण या उसकी हर बात पे सर नहीं झुकाने के कारण एक उदीयमान डॉक्टर जेल की सलाखों के पीछे 12 वर्षों तक रहा और उसकी माँ को भी जेल जाना पड़ा और वह उसे झेल नहीं पाई और उनका देहांत हो गया। तो जिस दिन उसने अपनी माँ को जेल से आकर के संस्कार उसका किया है, उसी दिन वह मर गया। वही वो अपनी कहानियां कहता है। फिर वो संथाल परगना के एक छोटे से उसमें जा करके घूमना language. Will that serve the purpose? You know, we have it in text. If we give you a hard copy, I think that is a good idea. You know, I was talking to another day. Mahadev used to say wonderful story. Yes. A story becomes good Yes. when the character gets himself transformed. Yes. You know, the character was going to kill the man who had killed his father. But when he saw the miserable plight of that man, he felt that that man is as good as his father. Yes, yes. Transformation. Yes. That was the very good. Certainly. Very compassionate. Yes. Point character taken. is getting transformed. Sir, You are actually, divulging his secrets. He did not want to share his secrets of trade. No, in good humor. No, nothing. He's saying you are divulging his secret. No, it is not a secret. It is the This appreciation side. As a writer. It is the secret of art. Yes. But you didn't mention about this. A single thread. Okay, all right. Now, on behalf of the Sahitya Academy, I thank you all for your august presence. And this has been a. Please trust us. We've not been sleeping nights. We've arranged for this festival. 1,000 writers across India is not an easy job. It's the largest festival in the world, literature festival. This year we are going to create a record already registered in the Guinness. Try to hear with these small things, you know. I'm sure writers are large-hearted people, and you kind of because we are doing our best. I thank you all for this session. And now I request the chair and the writers to please assemble here for a good photograph. And I request Devesh to please come and give us the official photograph. Let me interview, please. See, what Ramune was talking about. That such a silly or trivial matter. It's a very serious issue. See, one should be, writing should be communicated. It must be communicated to us. Language cannot be barrier. It can only be